इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई ये जो हजरत दूर बैठे हैं उनसे गुजारिश है करीब तशरीफ ले आए। Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Brothers are requested to come forward, inshallah. Let's fill in the gaps as much as we can. Allow gaps to the right, to the left, to a little bit of harakat, inshallah. Come forward, brothers. और ये जो साथी बैठे हैं अपने आगे की जगह जरा पुर कर लो, मिल मिल कर बैठो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बताओ Ji, come closer, inshallah. Once you fill in the gaps, please, inshallah. Come. देखो Brothers on the left hand side, right hand side, there are places in the front also. We can follow. माइक लगे हुए हैं, आवाज दूर तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन मजलिस में मिलकर बैठना ये मजलिस के आदाब में से है। Ji, the sound will reach you, but the adab and etiquette of the masjid is that we sit together, inshallah. The closer we sit, the more we will benefit. और जो अदब के साथ बैठते हैं बाअदब बा नसीब, जो अदब के साथ होते हैं वो नसीब वाले होते हैं, अल्लाह उनको महरूम नहीं करते। Those that will sit with respect, with etiquette, Allah subhanahu wa ta'ala will bestow them, Allah ta'ala will give them. So the more we sit with respect and etiquette, then the more we will get from Allah subhanahu wa ta'ala. इसलिए हम बैठना भी अच्छा करें, सुनना भी अच्छा करें। So we sit in a proper manner and we listen properly also. अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जो अच्छा सुनेंगे वो अच्छा अमल करेंगे। Allah subhanahu wa ta'ala said the person who listens properly will do good a'mal and good actions also. इसलिए अच्छे बैठेंगे तो अच्छा सुनेंगे। इसलिए जो दूर बैठे हैं उनसे गुजारिश है मजलिस में आ जाएं। Ji, Mana request Zura sitting in the back, come forward inshallah. Little bit of movement, the speaker is waiting inshallah. अल्लाह के फरिश्ते मजलिस को घेर लेते हैं, हम मजलिस में आ जाएं, मजलिस के बाहर ना रहें, ताकि हम भी फरिश्तों के घेरे में आ जाएं। So the malaika, they enshroud the gathering. Those that are part of the gathering, they will be within the enshroudment of the malaika. The more we sit behind, we will get left out. मजलिस पर अल्लाह की रहमत उतरती है, अपने आप को मजलिस के बाहर ना रखें ताकि अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन जाएं। And upon the gathering, upon the majlis, Allah's rahmat and mercy comes down. So let us not be out of the gathering, we will lose the rahmat and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. आप हजरात ने बड़ी कुर्बानी दी है कि अपने सारे मशगलों को छोड़कर आप यहाँ पहुँचे हैं, तो अब यहाँ आने को कीमती बनाएं कि यहाँ मजलिस में शरीक रहें। Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us. You have left behind everything back home and have come to the ijtima, to the majlis where Allah subhanahu wa ta'ala's name will be taken. May Allah ta'ala give us the full benefit. जो हजरात पीछे के शामियाने में हैं, जहाँ सोने की जगह है, वो भी उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आ जाएं। जो हजरात बाहर चहल पहल रहे हैं उनसे भी गुजारिश है वो भी अंदर आ जाएं। Ji, Mohana request those that are in the other tents, that are in the sleeping tents, they should come inside inshallah. Bajma Jor Jamaat, make some Bajma Jor outside this main tent and bring the brothers inside inshallah. All those brothers that are outside, they should also come inside now inshallah. ये जो इज्तिमा है ये कोई फंक्शन नहीं है जैसे और दुनिया में फंक्शन होते हैं, ये ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े मकसद और बहुत बड़ी ज़रूरत के लिए हम सबको जमा किया जाता है। This ijtima is no function, such an occasion, but we have come together for a very high purpose of life, to understand what is the purpose of our life. It's not a function. एक बहुत बड़ी बात की फिक्र दिलाने के लिए ये इज्तिमा होता है। Ijtima takes place to understand what is our fikr, what is the concern, what is the purpose of our life, something which is very necessary for our lives. वो क्या मकसद, क्या ज़रूरत और क्या वो क्या फिक्र है? What is that purpose, what is that need? We have come to understand that. What is it right now? कि जिसके लिए हम सबको जमा किया जाता है। For this purpose we have been gathered together. What is the purpose? कि वो बुनियादी बात ये है कि हर ईमान वाला अपनी उन जिंदगी पर आ जाए जो जिंदगी उससे अल्लाह चाहता है, उसकी फिक्र उसको दिलाने के लिए जमा किया जाता है। We have been gathered together for us to understand what is the purpose for Allah subhanahu wa ta'ala sending us into this world. Why am I here right now in the world? For this I have been gathered here to understand for what reason Allah ta'ala has sent me to this world. इसकी फिक्र क्यों दिलानी है? And who do we remind? Who do we give this fikr to? फिक्र इसलिए दिलानी है कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हमें पैदा करने के बाद कुछ जिम्मेदारियां हमारे जिम्मे रखी है, और ये बात फरमाई गई कि जो उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जिएगा अल्लाह पाक उसी को अच्छा जीना नसीब करेंगे, खुशगवार जिंदगी अल्लाह उसी को देंगे। Allah subhanahu wa ta'ala sent us into this world to fulfill some responsibility. It is a promise of Allah subhanahu wa ta'ala that person who fulfill his responsibility in this world, that which Allah ta'ala has put upon him, Allah subhanahu wa ta'ala will grant that person a good life who fulfills the responsibility of his life. और अगर खुदा न करे कोई आदमी जो उसके जिम्मेदारियां हैं उसको नहीं समझा या सुनकर अनजान बन गया या गफलत बरती, तो फिर अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि इन इंसानों को हम चैन से जीने नहीं देंगे।
And that person who has come into this world, sent into this world, but he hasn't understood the purpose of his life, hasn't fulfilled the responsibility that Allah Ta'ala put upon him, but he just passed through this worldly life. Allah Subhanahu wa Ta'ala promises that Allah Subhanahu wa Ta'ala will take away the peace of his mind and his life. He will not have a peaceful life. अल्लाह फरमाते हैं हम उसकी जिंदगी को अजीरन कर देंगे। मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। Allah Subhanahu wa Ta'ala says that person who will turn away from my remembrance and the responsibility of this worldly life, Allah Subhanahu wa Ta'ala will make his life very, very tight. His life will become very difficult. और ये बात पक्की थक्की है। And this is definite. There's no doubt in it. हम देखें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में और उनसे पहले जितने अम्बिया अलैहिस्सलातु तस्लीमात आए, वो एक जिम्मेदारी वाली ज़िंदगियों को समझाने के लिए आए थे। तो उस ज़माने के लोग जो कस्मा पुरुष थे, उन्होंने वो बातें समझी, उस पर अपने आप को डाला, तो अल्लाह ने उनको कैसे खुशहाल ज़िंदगी दी। और उसके बिलमुकाबिल वो मजमा कि जिनको बात समझाई गई लेकिन वो अनजान बने और वो सारी नेमतों में थे, लेकिन उन सारी नेमतों में होते हुए वो कैसे बर्बाद हुए, ये हमारे लिए इबरत और हमारे लिए नसीहत की चीज़ है। We find Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was sent into this world, and all Anbiya alayhimus salatu wasalam was sent into this world to make man understand the purpose of his life. And those, although they didn't have the outer worldly means, understood the message of the Nabi of the time, the messenger of the time, although they didn't have the worldly outward means, but Allah subhanahu wa ta'ala gave them a beautiful life. And there were those on the contrary that had all the worldly means and resources, but they didn't understand the message of the Anbiya alayhimus salatu wasalam, and they did not fulfill their responsibility. Allah subhanahu wa ta'ala removed their peace of mind, and they had a terrible life. अल्लाह पाक ने जहाँ उन लोगों की कारगुजारी बयान की है और वाक़ियात बयान किए, तो वाक़िया बयान के बाद अल्लाह पाक एक आयत लाते हैं। In the Quran Sharif, Allah subhanahu wa ta'ala, when He speaks about these people and the responsibility He put upon them and they did not fulfill it, Allah subhanahu wa ta'ala brings an ayat thereafter, a verse in the Quran Sharif. वो आयत क्या होती है? अक्सर ये मिलेगी, अअतबिरू या उलिल अलबाब वअतबिरू या उलिल अब्सार। क्या ये अकल रखने वालों, अगर तुम्हारे अंदर अकल है तो ये वाक़या हमने जो बयान किया उससे इबरत हासिल करो। अगर तुम्हारे अंदर सूझबूझ है तो इस वाक़ये से तुम नसीहत हासिल करो कि ये वाक़या हमने वाक़या बयान करने के लिए नहीं बयान किया। ये कोई वाक़यात की किताब नहीं है कि एक थी लैला, एक थी मजनू, या एक थी कौवा, एक थी मैना। इनको बयान करने के बाद क्या मतलब कि जिस तरह यहाँ मानने वालों के साथ ये हुआ और नाफरमानों के साथ ये हुआ, क़यामत तक के लोग जो भी मानने वाले होंगे उनके साथ ये होगा और नाफरमानों के साथ ऐसा होगा। So in Quran Sharif, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about our responsibility, in these ayats Allah has mentioned about the incidents of the people of before. You will find after mentioning these incidents of people of the past, Allah subhanahu wa ta'ala brings these ayat. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. O people of insight, O people of intelligence, take lesson. Take lesson that we send deen to these people. Anbiya alayhimus salatu wasalam was sent to them, but they didn't understand. So in this verse, after these incidents, Allah Ta'ala says that, O people of intelligence, O people of insight, open your eyes, open your heart and understand. This kitab, Quran, is not a kitab of incidents and stories. It is an incident of, it is a kitab of taking lesson and understanding your responsibility. That read the incidents of people of before, and those that followed and accepted the Anbiya alayhimus salatu wasalam, the messengers of Allah, accepted the deen of Allah tabarak wa ta'ala, open your heart and understand, they fulfilled the purpose of life and they were successful. And those that did not accept and they went against Anbiya alayhimus salatu wasalam, understand that they failed in their worldly life. These are lessons for those that have intelligence, that understand these ayat and open your mind and your heart and understand. You fulfill the command of Allah, the deen of Allah tabarak wa ta'ala, Allah will bless you in the same way. Just Allah ta'ala bless them, and if you will not, then you will also become a failure in this worldly life. वो क्या जिम्मेदारियां हैं जो हमें समझाई गई है? What are those responsibilities that Allah ta'ala has mentioned for us to understand? उलमा फरमाते हैं हर ईमान वाले के ज़िम्मे 3 जिम्मेदारियां हैं। Every believer has 3 responsibilities. कि वो उन जिम्मेदारियों को उसको समझना भी है और उन जिम्मेदारियों के जो तकाजे हैं उसको पूरा भी करना है। To understand the responsibilities and what is the demand of these responsibilities, we have to understand this. कि वो 3 कौन सी है?
What are these three responsibilities every one of us have to fulfill? पहली जिम्मेदारी ये है कि हम में का हर आदमी अल्लाह का बंदा है, तो वो अल्लाह का बंदा बनकर जीने वाला कैसे बन जाए, उसको फिक्र करनी है. So we have to understand that every one of us is a banda and a slave, a servant of Allah subhanahu wa ta'ala, and as a slave, how should I lead my life? वो अल्लाह का बंदा है तो अल्लाह का उस पर हक है, तो अल्लाह का क्या हक है उसे समझना होगा, उसे पूरा करना होगा. So I am a slave of Allah subhanahu wa ta'ala. For me to understand, I am a slave of Allah. I belong to Allah. And what are the rights of Allah upon me that I should fulfill? दूसरी बात, This is the second responsibility. दूसरी बात यह है कि उसका रिश्ता अपने नबी से है, तो नबी से उसका क्या रिश्ता है और उसके क्या तकाजे हैं, वो उसको समझने होंगे. The second responsibility is that I have a connection to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because I have a connection to Nabi alayhi salatu wasalam, what are my responsibilities? What are the demands of this responsibility? I got to understand this. और तीसरा क्या तकाजा है? What is the third responsibility and demand? तीसरे जो तकाजा है, जो जिम्मेदारी है, उसका ताल्लुक अपने दीन से है. एक अल्लाह से, एक उसके रसूल से और एक उसके दीन से, कि उसके दीन से उसका क्या रिश्ता होना चाहिए और उसका क्या तकाजा है, यह समझना होगा और उसे पूरा करना होगा. So third responsibility is I have a connection to my deen. So the first responsibility, I have a connection to Allah tabarak wa ta'ala. I am a slave of Allah. Second responsibility, I have a connection to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And my third responsibility is I have a connection to my deen. What is the right of deen upon me? What are the demands of deen from me? और ये तीनों ऐसी बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि कब्र में जाने के साथ इन तीन ही का सवाल होगा. And these are such responsibilities concerning which when I go into the grave, into the qabr, I will be questioned about these three responsibilities. सबसे पहला कब्र में अल्लाह का सवाल होगा, मन रब्बुका. The first question in the qabr will be about Allah tabarak wa ta'ala. Man rabbuka, who is your Rabb, who is your Lord? कि इसका क्या मतलब होगा कि अल्लाह के साथ जो तुम्हारा रिश्ता था उसको कैसा करके आए हो, वो पूछा जाएगा. What it means when this will be asked of you in the qabr, that who is your Rabb? What it means that Allah had a connection to you, you had a connection to Allah. How did you fulfill this responsibility that you had with Allah tabarak wa ta'ala? दूसरा जो सवाल होगा वो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के मुतालिक कब्र में होगा. The second question will be about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the qabr. और तीसरा सवाल दीन के मामले में होगा. And then the third question about your deen. क्योंकि वो तीन जिम्मेदारियां थी तो तीन का जवाब पूछेंगे. So you had three responsibilities in the worldly life. So obviously in the qabr now you will be asked about these three responsibilities. इसलिए इस मुबारक मेहनत के जरिए से ये बात समझाई जा रही है कि हर ईमान वाला अपने उन जिम्मेदारियों पर कैसे आ जाए. So therefore we have been explained to right now that how to fulfill these responsibilities. कि उसके क्या नफे होंगे, And what will be the benefit of this? कि उसके दो नफे होंगे. There are two benefits. कि अगर ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला हुआ तो कब्र के जवाबात आसान हो जाएंगे. The first benefit will be that person who will fulfill these responsibilities, then it will be easy for him to answer into the grave. और दूसरा नफा क्या होगा? The second benefit, का दूसरा नफा ये होगा कि ये जिम्मेदारियों के पूरा करने के बाद ये बंदा अल्लाह के रहम करम और अल्लाह की मदद और नुसरत उसके साथ शामिल हाल हो जाएगी. the second benefit of fulfilling these responsibilities is that in this worldly life he will live in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, in the kindness of Allah subhanahu wa ta'ala. He will be living with the help and assistance of Allah subhanahu wa ta'ala in this worldly life because he fulfilled his responsibilities. जब तक ये जिएगा अल्लाह के रहम करम के साथ जिएगा और जब मरेगा तो इसका मरना अच्छा हो जाएगा. So as long as he will live in this world fulfilling his responsibilities, he will live in the rahmat of Allah, the mercy of Allah, the kindness of Allah. And after he leaves this world, also he will enjoy the rahmat and the karam and the kindness of Allah subhanahu wa ta'ala. इसलिए ये जोड़ होते हैं अल्लाह के रास्ते में, इसीलिए भेजा जाता है. ये अल्लाह के रास्तों में भेजना कोई किसी को अपने घर बार छोड़ाना नहीं है. That is why we have these gatherings, for us to understand our responsibility to go in the path of Allah tabarak wa ta'ala. It's not just for us to leave our homes and to go in the path of Allah. It's for a responsibility. बल्कि ये अल्लाह के इस बंदे पर रहम है कि उसको इस माहौल से थोड़ा सा निकालो और एक अच्छे पाकीज़ा माहौल में ले जाकर उसकी जिम्मेदारी वाली जिंदगी पर उसको डाला जाए, उसकी जिम्मेदारी वाली जिंदगी उसको सिखाई जाए, उसकी मश्क करवाई जाती है. For this reason we are brought over here and explained to send out in the path of Allah, that take him out from that environment of his
where he's living and his work and his family, and send him out in the path of Allah, where the environment is pure and clean, for him to understand his responsibility and enjoy the rahmat and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, for him to understand what is his responsibility. तो समझने की चीज में यह है कि अल्लाह का ये हक है कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया जाएगा. So for him to understand that I cannot ascribe any partners to Allah, Allah is all alone, I cannot make any shirk with Allah tabarak wa ta'ala. अल्लाह शिरक को नापसंद करते हैं, शिरक को माफ नहीं करते. Allah subhanahu wa ta'ala hates shirk, ascribing any partners to Allah. Allah dislikes this. Allah will never forgive a person who ascribes any partners to him. एक अल्लाह को मानना और एक अल्लाह की मानना. One is to believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and one is to accept the commands of Allah. तो अल्लाह की मानने में जो फराइज है वो पूरे करना. So to accept the commands of Allah, what are the faraiz, the compulsory actions upon me, for me to accept it and to make amal upon it. और वो ऐसे पूरे करना जैसे उसने बताए हैं. And how to fulfill the commands of Allah as Allah wants it from me. और दूसरा, अल्लाह के बंदों के दरमियान हम रहते हैं तो अल्लाह के मखलूक के क्या हुकूक है उसको अदा करते हुए जीना. And we live amongst the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala to recognize the rights of people upon me and to fulfill the rights of people upon me. उसमें सबसे बड़ी बात कि हर आदमी अल्लाह का बंदा बनने की मश्क करे. So a person now practices how to be a true slave of Allah subhanahu wa ta'ala in the path of Allah. तो क्या हम अल्लाह के बंदे नहीं हैं? हम अल्लाह के बंदा, क्या हम सब अल्लाह के बंदे नहीं हैं? Are we not the slaves of Allah? सब आदमी ये कहते हैं मैं तो अल्लाह का बंदा, मैं तो अल्लाह ही का बंदा हूँ. Every person says, I am the slave of Allah. We do say it. अल्लाह कुरान में फरमाते हैं नहीं तुम अल्लाह के बंदे बनो, कूनू इबाद अल्लाह. तो क्या हम अल्लाह के बंदे नहीं हैं? Allah Ta'ala says, become my slave. Are we not the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं बहुत सारे वो हैं जो हमारे बंदे नहीं हैं. Allah also says, there are many of those are not my slaves. वो अपने मन के बंदे हैं, अपने नफ्स के बंदे हैं. Who are they? They are the slaves of their own carnal and self desires. They follow their nafs. उन्होंने अपना माबूद अपने मन को बना लिया है. दिल में जो आता है वही करते हैं. अल्लाह ने क्या कहा वो नहीं, दिल में जो आया वो करते हैं. Gee, they worship those demands of their nafs. They follow whatever the inside tells them. That has become their idol of worship. They worship that. They don't follow the commands of Allah. अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा. नबी जी आपने उसको देखा जिसने अपना माबूद अपने मन को बना लिया है. Allah says in Quran Sharif, O Nabi of Allah, haven't you seen those people or that person who has made his carnal desires, his nafs, has made his nafs, his form of worship. He worships his own self. Whatever his nafs says, he follows that. अपनी गमी, अपनी खुशी, अपनी जिंदगी की सारी चीजें अपनी जी की चाहत पर करता है. Gee, whether it be sadness or it be happiness, it all is dictated by his nafs within him. When to be happy, how to be sad, he follows that. दूसरी चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हक. The second thing is the right of Nabi alayhi salatu wasalam upon us. नबी अलैहिस्सलाम का क्या हक है? What is the haqq and the right of Nabi alayhi salatu wasalam? उलमा फरमाते हैं नबी के दो हक है. Nabi alayhi salatu wasalam has two rights. पहला हक ये है कि हमने अपने नबी को नबी माना तो हम सर से लेकर पांव तक मोहम्मदी बन जाएं, हुजूर के उम्मती बन जाएं. We believe in Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and we become like Nabi alayhi salatu wasalam from head to toe completely. We believe in Nabi alayhi salatu wasalam and we follow him externally completely. ये उनके नबी मानने का हक है. This is the haqq and the right of believing in Nabi alayhi salatu wasalam. दूसरा क्या हक है? What is the second right of Nabi alayhi salatu wasalam? कि हमने अपने नबी को आखिरी नबी माना है, अब कोई दुनिया में नबी नहीं आएगा. That we believe firmly that Nabi alayhi salatu wasalam is the final Nabi. There is no more prophet or messenger to come after Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. अगर कोई नबूवत की बात करे तो वो झूठा है. Whoever speaks about him being a prophet of Allah, a Nabi of Allah, he is false, he is a liar. तो आखिरी नबी होने का क्या तकाजा है? So what is the demand of Nabi alayhi salatu wasalam being the final Nabi? आखिरी नबी होने का तकाजा ये है कि हम अब नबी दुनिया में कोई नहीं आएंगे तो नबी की उम्मत की फिक्र हम और आप करें. So we understand that Nabi alayhi salatu wasalam is the final Nabi. There is no more Nabi to come. Therefore the responsibility of the messenger of Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to carry this message now has become our responsibility to carry the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. नबी फरमाते हैं ये मेरा भी काम है और जो मेरा कलमा पढ़े उन सब का काम है. हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी. Nabi alayhi salatu wasalam says that this is my responsibility to pass the deen on, and also those who have read the kalima and believe in me, it is also their responsibility now to take the message ahead. इसलिए तबलीग का काम कोई ये तहरीक नहीं है, ये कोई खास जमात का काम नहीं है, ये हर ईमान वाले का काम है.
This effort of tabligh is not now confined to some movement or a few people's responsibility. Whoever reads kalima la ilaha illallah, it is his responsibility also to make tabligh. ये अलग बात है कि कोई नहीं कर रहा है, It's a different thing. Somebody is not doing it. वो कल कयामत के दिन उसका देख लेगा कि करने का क्या मिला, नहीं करने का क्या नुकसान है. Qiyamah's day he will see that what was the loss of not doing this effort and what was the benefit of doing it. Qiyamah's day he will see. जैसे एक आदमी बाप का बेटा है तो उसके जिम्मे बाप की खिदमत है, नहीं कर रहा वो अलग बात है. Like a person lies the son of his father, if he doesn't fulfill the rights of his father, that's his own doing that. और तीसरी बात जो है वो हमारे दीन का हमारा रिश्ता है, उसका क्या तकाजा है. What is the demand of our connection to our deen? एक अल्लाह का रिश्ता, एक नबी का रिश्ता, तीसरा दीन का रिश्ता. So first is the connection we have with Allah subhanahu wa ta'ala, then the connection we have with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the third contact we have with the deen of Allah tabarak wa ta'ala. What is the demand? दीन का तकाजा ये है कि हम उसकी नुसरत करें. The demand of deen is that we help the deen of Allah. दीन की नुसरत अल्लाह ने कुरान में चाही है. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह के दीन के मददगार बनो. Allah demands in Quran from the believers, Ya ayyuhalladhina, O people of Iman, become the helpers, Ansar Allah, become the helpers of the deen of Allah tabarak wa ta'ala. नुसरत का क्या मतलब? What does it mean? What does it mean to help the ये deen of अरबी Allah? लफ्ज है, ये अरबी लफ्ज है. This is an Arabic word, nusrat, to help. उसका क्या मतलब है? What does it mean to help the deen of Allah? उसका तर्जुमा ये होता है, जमीन में जो पौधे उगे हैं उसको पानी पिलाना, पौधों को पानी पिलाओ. सिकायतुल अर्द, जमीन को, खेती को पानी पिलाना. The word nusrat in Arabic, in linguistics, means now that we have crops, to water the crops, to irrigate the crops. This is the meaning of nusrat, to help, to irrigate and to give water to the crops. कि इतना पानी पिलाओ कि खेती अपने पैरों पर खड़ी हो जाए. To give it so much of water that now the farm and the crops begin to grow on their own. ऐसे दीन की ऐसी नुसरत करो कि दीन खड़ा हो जाए. So for us to help the deen of Allah subhanahu wa ta'ala to the extent that the deen also becomes established. अल्लाह ने ये हमसे मांगा है. Allah has demanded this from us. और जो ईमान वाला इन जिम्मेदारियों को पूरा करके जिएगा, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं उसको हम अच्छा जिलाएंगे. Allah's promised that person who will do this, fulfill the taqaza of deen, Allah subhanahu wa ta'ala has promised Allah will give him a good life. और जो इन जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं उसका चैन का जीना हम खत्म कर देंगे. And that person who does not fulfill the responsibility of deen, Allah has promised in Quran Sharif, Allah will remove his peace of mind and peace of heart. सबकी जिंदगी का चैन और बेचैनी वो आसमान से आती है. Every person's peace of mind and peace of life, this peace we're talking about, comes from the skies from Allah subhanahu wa ta'ala. जब कोई आदमी बंदा अल्लाह को राजी करता है तो आसमान पर अल्लाह ऐलान करते हैं, जिब्राइल मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो. आसमान के फरिश्तों से कहो वो भी मोहब्बत करे, जमीन वालों से कहो वो भी मोहब्बत करे. फिर किताबों में आता है युदाउ लहुमुल कबूल, अब जमीन पर बसने वाली सारी मखलूक के दिलों में उसकी मोहब्बत भर दी जाती है. So when it comes to a person now fulfilling his responsibility, then Allah subhanahu wa ta'ala in the skies announces to Jibreel alayhi salatu wasalam, oh Jibreel, I love the certain person. He's fulfilling his connection that he has with the deen of Allah tabarak wa ta'ala. Oh Jibreel, you also love him. This love of Allah subhanahu wa ta'ala spreads in the skies. From there, it is mentioned, yuda'u, that it is placed upon the earth. What does it mean? That Allah accepts him. And people on the earth begins to love this person because he fulfilled the responsibility of his life. और जब अल्लाह किसी से नाराज होते हैं तो उसके हालात आसमान से खराब करते हैं. जिब्राइल इस्लाम से फरमाते हैं मैं उससे नाराज हो गया. आसमान के फरिश्ते से कहो वो भी नाराज हो जाएं, और जमीन वालों से कहो वो भी नाराज हो जाएं. अब जमीन के सारे नक्शे बने हुए उसके खिलाफ हो जाते हैं. When a person does not fulfill his responsibility to his deen, then the decision of removing the peace of his life is made in the skies. Allah subhanahu wa ta'ala says to Jibreel alayhi salatu, O Jibreel, this person, I am displeased with him. Now remove his peace. Then the malaika and angels in the skies also become displeased with him. And Jibreel alayhi salatu wasalam. And then all the conditions in the world go against him. His entire life becomes upside down. आदमी घर होते हुए बगैर घर का हो जाता है. Person has a house, but in reality he doesn't have a house because there's no peace in the house. बीवी होते हुए बगैर बीवी का हो जाता है. Person has a wife, but in reality doesn't have a wife because she's against him. बच्चों के होते हुए बगैर बच्चों का हो जाता है. He has children, but has no children at the same time. भाई बहन के होते हुए बगैर भाई बहन का हो जाता He है. has family, brothers and sisters, but in reality he has no brothers and sisters. क्या हुआ? What happened? कि आसमानों से उसकी बर्बादी के फैसले हुए हैं. That from the skies there was a decision of his destruction. हमारी आबादी और बर्बादी हमारे हाथ में नहीं है.
If our life to be made or for our life to be destroyed, is that dependent on our decision? This happens from the skies. दुनिया में हजारों लोग वो मिलेंगे जिन्होंने अपनी पूरी आबादी की अच्छी शक्लें बनाई और नतीजे बर्बादी के मिले. There are thousands, millions of people in the world that have made all the things around them to make their life comfortable, but in reality their life has been destroyed. अच्छा बताओ, दुनिया में जितने लोगों की औलादें हैं उनमें ज्यादा फरमाबरदार है या नाफरमान है? Gee, we can understand that people that have children in the world, most of the children that we have in the world are obedient or disobedient. बोलो. Gee, you all can answer. जी, नाफरमान है. अच्छा, ये नाफरमान जितनी औलादें हैं उन्होंने कोई नाफरमान बनाने वाले मदरसे में इनको मदरसा भेजा था? Gee, all the children we find in the world that are disobedient, was there some madrasa or school we send them to for them to learn how to become disobedient? या स्कूल में ऐसी कि जहां नाफरमानी सिखाई जाती हो वहां भेजा था? Or there's some special school that they went to understand and to learn how to become disobedient? अच्छा, 2 रकात पढ़ी थी कि अल्लाह एक खूबसूरत नाफरमान औलाद दे दे. Or any person that 2 rakat namaz, ask Allah, Ya Allah, give me a beautiful disobedient child. Anybody made this dua? तो क्या हुआ था So what happened? कि जब माँ उम्मीद से थी तब से दुआ करवा रहे थे कि उम्मीद से है दुआ करना नेक औलाद आ जाए. How many a mother, a parent makes dua when she's expecting, Ya Allah, give me a beautiful, pious and a normal, obedient child. और जब बच्चा पैदा हुआ तो अच्छे से अच्छा नाम रखा ताकि वो अच्छा बने. And when the child is born, we give beautiful names so the child becomes beautiful also. और जब वो स्कूल मदरसे में गया तो अच्छे उस्ताद, अच्छे मौलवी साहब के पास पढ़ने भेजा, अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजा. When we send him to school and madrasa also, we chose the best madrasa, the best ustaz to teach him also. कोई माँ बाप भी इसके अलावा और कोई चीज नहीं, सब अच्छे से अच्छी ही करते हैं. And parents, we know, want to give the children the best of the best. तो जो अच्छे असबाब इख्तियार किए तो नतीजा ऐसा होना चाहिए कि वो जुनैद बगदादी बन जाना चाहिए. So the type of means that we have adopted now to make our children, or we are adopting, the outcome of this should be that we have Junaid Baghdadi of the time, obedient children. फिर ये नाफरमान कहाँ से हो गया? So how did the child become disobedient? ये आसमानों से फैसले हुए हैं. This decision was made in the skies. हमारे हाथ में हमारे बच्चों की लगाम नहीं है. The reins upon our children's necks is that in our hands, is the hands of Allah. अच्छा, दूसरी बात बताओ कि दुनिया में ज्यादा लोग कर्जदार हैं या ज्यादा मालदार हैं? In the world right now, we find the people are more in debt or are they more affluent? Gee, what are they? They're in debt, so they're free from debt. बैलेंस वाले ज्यादा है या कर्जों वाले ज्यादा हैं? Those that have bigger balances are more, or those that are in debts are more? जी, कर्जदार. कर्ज वाले. अच्छा, वो रोजाना सुबह उठकर दुआ की थी, उन्होंने कहा अल्लाह हमें कर्जदार बना दे, ऐसी उन्होंने दुआ की थी? Any person made dua, Ya Allah Ta'ala put me in debts? जी, अरे बोलो ना. तो फिर ये कर्जदार कैसे हो गए? How did he become indebted to anyone? अच्छा, ये कारोबार करते करते कर्जदार हो गए या कारोबार को ताला लगा कर कर्जदार हो गए? Gee, how did he become in debts? By running the business or by closing the business? बोलो जी. चालू कारोबार में तो कारोबार उन्होंने कर्जदार बनने के लिए शुरू किया था या मालदार बनने के लिए? So he started the business now to go into debts to become affluent and rich. बताओ. Gee. तो फिर जो दुकान मालदार बनने के लिए बनाई थी उसने कर्जदार कैसे बना दिया? So he opened the shop to make money, but how was it he ended up in debts now? What happened? अच्छा, एक चलो कर्जदार हो गए. अब रोजाना घर में जितने लोग हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि जो कर्जा हुआ है वो कम हो जाए या बढ़ जाए? क्या की कोशिश करते हैं? And also that person in debts now, every day at home now, what is the effort at home? To increase the accounts or to decrease it? To get him out of debts, to put him more into debts? बढ़े उसकी कोशिश करते हैं या कम हो उसकी कोशिश करते हैं? What effort they make now to अरे बोलो ना. to increase the debts or to decrease it? जी, कम हो जाए उसकी. अच्छा, कोशिश कम होने की करते हैं. अच्छा, ये बताओ रोज बढ़ जाता है या कम हो जाता है? What is the reality? Does the debts increase every day or does it become less? जी, तो कोशिश कम करने की कर रहे हैं, बढ़ कैसे जाता है? So how does it happen? He's making an effort now to bring the accounts down, but the accounts are getting more. How is that happening? कई आसमानों से फैसले हुए हैं. हमारी तदबीर से होते तो हम कर्जदार ही ना होते, फिर भी कर्जदार हो गए. और रोज कोशिश करते हैं फिर भी कर्जा नहीं उतर रहा. क्या हुआ? कई आसमानों से फैसले चलते हैं. The reality is that decision is made from the skies. If we had in our hand our taqdeer, we all should be rich right now. But it depends on our amal. The decision is made in the sky whether we will be affluent or whether we will go into debts.
कि ये फैसले कैसे होते हैं How does this decision take place in the कि जब sky? अमाल आसमानों पर अच्छे जाते हैं तो अच्छे फैसले होते हैं और अमाल गलत जाते हैं तो गलत फैसले होते हैं. So when good a'mal, good actions go up to the sky to Allah subhanahu wa ta'ala, then good decisions come down. When bad actions go up, then bad decisions come down. ईमान वाला गैर ईमान वालों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता. Person with iman and person without iman cannot live the same life. Their lives are different. गैर ईमान वालों के लिए दुनिया जन्नत है, उन्हें जो करना है करे. हमारे लिए जन्नत नहीं है, हमारी सारी बातें नोट हो रही है. To the non-believer, to the disbeliever, person doesn't have iman. For him, this place, dunya is jannat for him. There's no for him jannat in akhirat. For us, this place is not a place of jannat. For us, is akhirat. हमारी ये इम्तिहान की जगह है. This is a place of our test and examination. और अल्लाह फरमाते हैं जिसके अच्छे अमल होंगे उनको अच्छा बदला मिलेगा और जिसकी गलतियां होगी उसको अपनी गलतियों का भुगतना पड़ेगा. मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा. Allah subhanahu wa ta'ala has promised that person who do good deeds, he will enjoy the benefits of his good deeds. And the person who does evil actions, and the evil of it will be back upon him. अभी इन बातों का यकीन हमारी जिंदगियों में नहीं आया है. This conviction hasn't come into our hearts as yet. अभी हम दुनिया वालों की तरह हमारा यकीन बना है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. ऐसा करने से ऐसा नहीं होता. आसमान वाला जो करेगा वो होगा. Right now, our yaqeen has become like the yaqeen of the people out there. They believe now that we will make effort of dunya, our dunya will open up. Whereas it's not like that. We have to come on to deen. Our yaqeen has become like their yaqeen. अगर यकीन आ जाए तो इस मुबारक यकीन वाली जिंदगी पर हम अपने आप को डाल देंगे. If we understand and our yaqeen is correct, then we will make our life according to this effort of yaqeen. अपनी औलादों को भी इस पर डालेंगे. And we will put our children upon the same line. लेकिन चूंकि इस पर यकीन नहीं है कि ऐसा ही होगा, इसलिए हमने अपने आप को उस पर अभी नहीं डाला है. Therefore, we don't have this conviction that we do the correct things, there could be correct outcomes. So we don't believe it, therefore we're not doing it. इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर इस मुबारक बातों का यकीन जिंदगियों में आए, ये उसूली जिंदगी का यकीन जिंदगी में आए. That is why we are taken out in the path of Allah, for us to understand what is the correct yaqeen, how to bring our life upon this conviction upon Allah tabarak wa ta'ala. और दूसरा 4-4 महीनों में निकालकर इस पाकीज़ा अमाल वाली जिंदगी पर उसको अमली तौर पर डाला जाता है ताकि एक तरफ उसका यकीन बने और एक तरफ ये पाबंदी वाली जिंदगी उसकी बने. The second reason we go out in the path of Allah is for us to practice how to have this way of life. That is amal come into our life, our yaqeen becomes correct and our amal also become correct. ताकि जब तक वो जिए अल्लाह के रहमो करम का मुस्तहिक बन जाए. As long as he lives in this world, he will be deserving of the mercy of Allah and the kindness of Allah. वरना इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी. Or else his life will be spoiled, destroyed. और रहा मरना, ये तो जीने की बात हुई, रहे फिर मरने की बात. अगर इसकी जिंदगी अच्छी नहीं हुई फिर इसका मरना भी खराब हो जाएगा. This is about our life only, whether it will be made, whether it will be spoiled. But when a person leaves the world, what will happen to him then? Then it will be only destruction after he leaves this world. और जिसका मरना बुरा हो गया उसके बाद मसाइल ही मसाइल है. When a person's ending now will be bad, he leaves this world in a bad state, then now all the stages ahead also will be destruction and be failure. अच्छा कौन मरेगा, बुरा कौन मरेगा? अच्छा मरना किसका होगा और बुरा मरना किसका होगा? Gee, who will have a good death and who will have a bad death? हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छा मरूं. Every person desires to have a good death. तुम्हारे फरमाते थे तुम जैसे जियोगे ऐसे मरोगे. Gee, we are made to understand as you live your life, this is how you will die. कमा तहयौन तमूतून, जैसे जियोगे ऐसे मरोगे. As you live your life, accordingly you will leave this world also. और कमा तमूतून तुबासून, जैसे मरोगे ऐसे ही अल्लाह उठाएगा तुम्हें दोबारा. And how you will pass away on the day of Qiyamah, you will be raised in the same condition. ऐसा नहीं होगा कि कोई गलत जी ले और अच्छा मर जाए, ऐसा नहीं होगा. Is that possible? A person has a bad life, he led an incorrect life, and he has a good death. It doesn't happen like that. और इंशाल्लाह ऐसा भी नहीं होगा कि अच्छा जिए और बुरा मर जाए. It won't be also that a person has a good life and he will die a bad death. It won't happen like that. इसलिए अमाल वाली जिंदगी अगर जी गई तो दुनिया में बरकत होगी और मरना अच्छा हो जाएगा. But the person who will live a good life according to the dictates of Allah Tabarak wa Ta'ala, his life will be good and his death also will be good. इसलिए अल्लाह के रास्ते में जाकर इन मुबारक जिंदगियों को सीखना है. We go in the path of Allah to learn this blessed way of life. और वापस आने के बाद अल्लाह के रास्ते से And after we return from the path of Allah Tabarak wa अपने Ta'ala, आप को ऐसे माहौल में रखना है जिसके अंदर ये जज्बात, ये सोच, ये फिक्र बाकी रहे. so when we return now, we live in such an environment where our iman and our feelings remain also firm on the deen of Allah Tabarak wa Ta'ala. क्यों?
Why? कि साल के 365 दिन है, अगर हम चिल्ला जाएंगे तो 40 दिन गए, 320 दिन तो अपने घर पर रहेंगे। Gee, we have the whole year, we go 40 days in the path of Allah, tabarak. 40 days now, we learn how to live an entire year ahead of us. अगर कोई आदमी 4 महीने जाएगा तो 4 महीने वहां रहेगा, तो 8 महीने घर पर रहना है। Person goes for 4 months in the path of Allah, he returns, 8 months he's at home now. अगर उसकी वहां ये अच्छी जमात में फिक्र बनी, अब घर पर आने के बाद अगर वो अपने आप को ऐसे माहौल में नहीं रखेगा, तो फिर वहां जो माहौल होगा वो माहौल से असर लेकर ऐसा ही हो जाएगा जो मकाम पर माहौल होगा। So although he go in the path of Allah, but after he returns, he spends more time at home. Does not connect now to a correct and a good environment, then the environment around him will affect him. And then now he will live according to the environment, he will lose what he learned in the path of Allah tabarak wa ta'ala. आदमी पर माहौल असर करता है, That's why a person takes effect on the environment around him. और सब पर असर करता है। And environment affects everyone. अभी ठंडी का माहौल आया है, तो क्या वो ठंडी सबको नहीं लगती? Now it's cold, don't we all feel cold? वो ठंडी ऐसा कहती है कि हमारे मोहल्ले के सेठ साहब हैं, उनको नहीं लगूंगी, जरा निकल जाऊं टन लेकर, ऐसा कहती है? Is it possible now when the cold comes, the cold says I won't affect now the very rich person, he still feel warm. He also feels cold. हमारे मोहल्ले में मौलवी साहब हैं, हाजी साहब है, काजी साहब है, अमीर साहब है, वो ठंडी कहेगी कि नहीं ये तो बड़े बुजुर्ग लोग हैं इसलिए टन लेकर निकल जाऊं, इनको नहीं लगनी है, ऐसा कहती है वो? Is it possible that the cold, when it comes, the cold will say now in this locality there's a mawli sahab there, there's a qazi sahab there, there's a very pious person, so now we'll just go around these pious people, we won't make them feel cold. Is that possible? It's not possible. मोहल्ले में मस्जिद है तो वो ऐसा कहेगी कि भाई यहाँ नमाजी बहुत आते हैं इसलिए बेचारों को तकलीफ नहीं देना, जरा टन लेकर निकल जाऊं, मस्जिद में नहीं घुसना है। ठंडी ऐसा कहती है ना? Does the cold ever say now that there's a masjid over here, many musallis come to the masjid, so now when the cold comes, the cold says we'll go around the masjid, it won't affect the people of the masjid. Doesn't happen like that. ठंडी कोई चीज को नहीं समझती, सबको लगती है और सब जगह दाखिल हो जाएगी। Gee, the cold is such now that it affects everyone and it goes everywhere. ऐसे माहौल जो उमूमी माहौल होगा वो सबको लगेगा। The same is now the general environment out there affects everyone. माहौल की मिसाल मौसम की तरह है। The mahal environment is like the weather and the seasons. देखो हमारे बच्चों के बाल की कटिंग बदल गई है, बहुत सौ के लिबास बदल गए हैं। We find many of our children and ourselves now, our hairstyles have changed and our clothing has changed also. हम पूछें ये कहाँ से आया, ये स्टाइल कहाँ से आई? Ask ourselves now, where did the style come from? तो हम ये कहेंगे वो है ना यहूद और नसारा उन्होंने का चलाया, हम ऐसा कहते हैं। So we say this came from the Christians and the Jews. They started the style. तो मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई यहूदी हमारे दरवाजे पर आकर जो दरवाजा ठीक खटखटाया, भाई साहब कैसे हो, ठीक हो, हम आपके लिए स्टाइल लेकर आए हैं, जरा बाल ऐसे बना लो, कपड़े ऐसे लेकर आए, ऐसा बना लो, आज तक हमारे दरवाजे पर कोई आया है? So Maulana asked, has any Christian or Jew knocked our door and say, the brother, we've come with the style haircut and the style clothing, that now you must adopt this. Did anybody come to our door and knock our doors yet? तो हमारे वहां तो कोई नहीं आया और हम कहते हैं वहां से आया। Nobody came to us, but we are saying the style came from them. But nobody came to us to tell us must do it. तो बात यह है कि उसका माहौल उन्होंने समंदर पार बनाया, लेकिन उसका असर हमें समंदर पार हो गया। Gee, the style and the fashion now, they did it overseas, foreign. But from there we imported, we brought it to our country also. के माहौल का असर है कि इतने दूर उनके वो माहौल बना, हमारे बच्चे यहाँ हैं, उस पर असर हो गया। औरतों के लिबास बदल गए, मर्दों के लिबास बदल गए, कि माहौल का असर हुआ। That's why the environment has an effect. That environment they made now in their countries, in overseas countries, but such a strong environment that it affected our shores also. And our clothing has changed, our women folk and our children, their hairstyle and their clothing has changed because the mahal is so strong, environment was so strong there, it came and hit our shores also. उसी को मोबाइल में देखा, उसी को टेलीविजन में, उसी को अखबार में देखा, तो फिर ऐसे ही होने लगे। So we began to look at the style of this now in the cell phone and on the internet, etc. And this has affected our lives also. क्या माहौल का असर होता है? This is the effect of the environment around us. इसलिए हमको अच्छे माहौल में रहने का हुक्म है कि अच्छे माहौल में रहो। That's why we are commanded to stay in a good environment. घर बनाने के मौका है तो फरमाया कि घर बनाने से पहले पड़ोसी देखो कि पड़ोसी कैसा है। उतलु बिल जार क़ब्लद्दार, घर से पहले घर का पड़ोसी देखो, क्यों? कि तुम्हारा पड़ोसी तुम पर असर करेगा। That's why we are commanded also that before you buy a house, see who the neighbors are. The effect of the neighbors shouldn't come into my house. The environment is so important, the environment we live in. हमको हुक्म है अच्छे दोस्त बनाओ, तुम्हारे दोस्त का असर तुम लोग है। Have good friends or your friends will affect you also. अल मरउ अला दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है।
that a person will follow the deen and the religion of his friends. So make sure your friends are good. फलयंदुर बिमन यतखल्लल, खूब गौर करे कि दोस्त किसको बनाया है, वो ऐसा ही बन जाएगा. So make sure you choose good friends, because your friends will affect what you believe in and what your environment is. माहौल आदमी पर असर करता है. So the environment has an effect upon us. अरे ये इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि अल्लाह पाक ने बैतुल्लाह को हिदायत का मरकज बनाया. What can be a better example? Allah subhanahu wa ta'ala made the Baytullah, the Kaaba Sharif, a place of hidayat. वहां अल्लाह की रहमत उतरती है और वो हिदायत का मरकज है. That is the headquarters of hidayat. Allah's rahmat comes upon the Kaabatullah, the Baytullah. हमारे नबी अलैहि सलाम के आने से पहले उसके अतराफ का माहौल खराब हो गया कि लोग बुत परस्ती में दाखिल हो गए. Before Nabi alayhi salatu wasalam, around the Kaaba Sharif, there were idols. People worshipping idols in the Kaaba Sharif. तो उस बुत परस्ती ने इतना असर किया कि बैतुल्लाह भी उसके असर से बच नहीं सका. बैतुल्लाह में भी बुत घुस गए. So around the Kaaba Sharif, they were worshipping idols. Such an effect of idols that now the idols came into the Kaaba Sharif also. And they began to worship idols in the Haram and in the Kaaba Sharif. कितने बुत घुस गए थे? कितने बुत घुसे थे? पूछो. Ji, how many idols were there in the Haram, in the Kaaba Sharif? 360 बुत बैतुल्लाह में घुस गए, वो भी नहीं बच सका. 360 idols in the Kaaba Sharif only. जब हिदायत का मरकज अपने अतराफ के माहौल से नहीं बच सकता तो मेरा और आपका घर कैसे बच जाएगा? When the markaz and headquarters of Hidayat, the Kaabatullah, could not be saved from the evil environment around it, how can we be saved from the evil environment around us? हमारी मस्जिदें कैसे बच जाएगी? How will our masjid be safe also? हम देखें हमारी मस्जिद में भी हमारा जवान ऐसे ही बैठता है जैसे बाजार में बैठा है. We see in our masjid also the environment that the youngsters are sitting. The youngsters are sitting in the masjid like how they sit in the bazaar, in the marketplaces. इसीलिए सबसे पहले ईमान वाले की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जो चीज बनाई वो माहौल बनाया. It is why the first command and the first practice and amal of Anbiya alayhimus salatu wasalam was to make a good environment. कहाँ का माहौल बनाया? What kind of environment they made? कि जहाँ मुसलमान रहता है वहाँ का माहौल बनाया. Where the Muslims are staying, make the environment over there. कि सबसे पहले जब मदीना में गए तो मदीना मुनव्वरा का ऐसा माहौल बनाया, ऐसा जोरदार कि मुनाफिक भी नमाज पढ़ता था. Medina Munawwara, when Sahaba Ikram came, they made such a strong environment of iman that even the hypocrite read salah with jamaat in the masjid. और जब माहौल नहीं होता तो मुसलमान का बच्चा मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर शराब पीता है. And they say when there is no environment of deen around, then even the Muslim child will sit outside the masjid and do haram activities. कि क्या हुआ कि माहौल नहीं है. Why? Because there is no environment. घरों का माहौल बनाया. We make the environment of the home. हुजूर के जमाने में औरतों को घरों में भेजते थे तो वहां से उनको दीन मिलता था. The day in the homes also, the mustarat of the Sahaba Ikram radiyallahu anhum, their wives also were getting deen in the homes. सबसे बुरी जगह जो दुनिया में है वो बाजार है. उन्होंने बाजार का माहौल बना दिया. The worst place in the world are the bazaar and marketplaces, the malls. They have made the environment in the malls right now. हजरत अली फरमाते हैं कि हमारे बाजार हमारी मस्जिदों की तरह हो गए. सूकुल मुस्लिमीन का मुसल्लाहुम. So Ali would say that our bazaar, our marketplaces has become like the masajid right now. तो ये माहौल अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने ईमान वालों की हिफाजत के लिए बनाया था. This environment is made for our protection of our iman. कैदी पकड़ा जाता था, 2 दिन मस्जिद में सुतून से बांध दे, मस्जिद के माहौल उस पर इतना असर करता था कि तीसरे दिन वो ईमान में दाखिल हो जाता था. You see, a person, a non-Muslim, was taken as a prisoner and locked up in the masjid for 2-3 days. Just looking at the environment in the masjid, his heart changed and became a Muslim just because of the environment in the masjid. हमारे मोहल्लों में लुच्चा लफंगा शराबी कबाबी आदमी चिल्ले में आता है, 4 महीने में आता है, एक नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन जमात में आने के बाद उसको माहौल मिलता है, वो तहज्जुद गुजार पढ़ता है, वहां तहज्जुद पढ़ता है वो. If I nowadays a person are involved in sin and gunas, in alcohol, in drugs, etc., he goes a few days in the path of Allah Tabarak wa Ta'ala and he spends his time in that beautiful mahal environment. A person who never read one namaz, he returns home now performing tahajjud namaz. क्या हुआ? What happened to him? जमात में माहौल मिला. Because it was an environment in the path of Allah. वही लड़का थोड़े वापस आने के बाद थोड़े दिन घर में नमाज पढ़ता है, फिर फर्ज भी छोड़ देता है. Then a person few days reads namaz at home, then he leaves the farais also. तो उसके अब्बा कहते हैं कि मुझे क्या फायदा हुआ, बच्चा नमाज भी अब तो नहीं पढ़ता, 4 महीने भेजा था. He says, what? Even my children are not performing namaz. तो उसके अब्बा से कहना है कि वो तो वहां बुजुर्ग बनकर आया था, तहज्जुद गुजार. हमारे घर की बेदीनी ने फिर उसको बेदीन बना दिया, मोहल्ले की बेदीनी ने उसको बेदीन बना दिया.
So a person in the path of Allah, he'll do it. But he comes home, doesn't make an effort in the whole environment at home, then he will lose that effect that he had in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. This be-dini, having no deen in the house because there's no environment in the house. इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने हमें रहबरी फरमाई कि ये इस मुबारक जिंदगी का यकीन लाने के लिए अल्लाह के रास्तों में जाना और आने के बाद ईमान वाले को ऐसा माहौल मिले, इसके लिए वो अपने मकाम पर 5 अमाल को जिंदा करे। ये 5 अमाल वो है कि अगर उसको जिंदा किए जाएंगे तो उसके 3 बड़े बड़े नफे होंगे। That is why Allah has mentioned, we go in the path of Allah, learn the amal, and then come back home and continue the effort, and we learn how to establish the 5 amal in our life to keep this environment. 3 क्या नफे होंगे? What will be the benefit of this 5 amal? सबसे पहला नफा ये होगा कि ये आदमी अपनी जात से महफूज होता रहेगा, महफूज रहेगा। दुनिया के जरासिम से, बुराइयों से अल्लाह इसकी हिफाजत करेंगे। That a person now, the benefit of the 5 amal is a person who remain protected from the environment around him, the viruses around. The viruses around of disobedience will not affect him. Allah will keep him in his protection. दूसरा क्या नफा होगा? What is the second benefit? कि उसका माहौल बनेगा, उन अमाल से माहौल बनेगा। Through this amal, an environment will be established. तीसरा क्या नफा होगा? The third benefit, कि वो और ईमान वालों के ईमान की और दीन की हिफाजत करने का जरिया बनेगा और ईमान वालों को दीन पर जमने और जमाने का जरिया बनेगा। he will become a means now for other people to come into deen, for the iman to be protected. His iman is protected. He made an environment. Others around him also, the iman will become protected. ये 5 अमाल का जो हमसे मुज़ाकरा हो रहा है, हमारे मौलाना अब्दुल्लाह सर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, उनके रायबंड के बयान में है कि तुम ऐसा समझते हो कि हमने आपको ऐसी कोई बात बता दी कि ये जो बातें आपको बताई है उसके लिए मनो आंसू बहाए और अल्लाह से इसको कबूल करवाया है। These 5 amal that we are telling you about, our ulama say that these amal we just take it out, didn't take it out from anywhere. This after crying and asking Allah subhanahu wa ta'ala, we have come with these 5 amal for your own protection. उसमें सबसे पहला अमल कौन सा है? What is the first amal for our protection? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हर ईमान वाला अपने आप को अपनी मस्जिद की जमात में मशवरे में रोजाना बिठाए। That every person should sit in his masjid every morning in the mashwara. क्यों? Why? कि आदमी की अपनी फिक्र की हिफाजत जरूरी है। It's very, very important for a person to protect his fikr and his thoughts. क्यों जरूरी है? Why? कि इसलिए जरूरी है कि आदमी को उसकी फिक्र चलाती है। Because a person, he is governed by his thoughts. Whatever his thoughts are, this governs his life. आदमी की जो फिक्र होगी वो काम वो करेगा। Whatever concern and whatever thoughts he has, accordingly now he will run his life. आदमी की फिक्र उसके अमल की इमाम होती है। So a person's, his fikr and his thoughts are the imam of his amal. देखो आप हजरात को इज्तिमा का इल्म हुआ, आपने फिक्र किया नहीं कि आप आ गए। एक बहुत बड़ा मजमा वो है जिन्हें पता था इज्तिमा है लेकिन फिक्र नहीं हुई, वो नहीं आए। क्योंकि फिक्र में नहीं आया, मालूमात में है, फिक्र में नहीं है तो वो नहीं आए। आपके मालूमात में भी आया, फिक्र में आया तो आप यहां आ गए। Maulana said that we all came to know about the ijtima. So that fikr and concern came in the mind, I have to come. So the fikr is the imam. So the fikr put the limbs into movement and brought us here to the ijtima. Many people out there know about the ijtima, but there is no fikr. Therefore they haven't come. So the fikr is the main thing. What concern, what thoughts we have, what search we have, that will now push us ahead. इसलिए सबसे पहले हमें रोजाना 24 घंटे पता नहीं हम कहां कहां की बातें सुनते हैं, तो जो बातें सुनेंगे वही चीजों दिल दिमाग पर गालिब आ जाती है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं रोजाना अपने आप को दीन की फिक्र के लिए रोजाना अपनी मस्जिद में थोड़ी देर तो बिठाए। In 24 hours we hear so many things affect our minds, affect our thought pattern. That's why our Kabir said that we have to sit in the masjid for some amount of time in the mashwara and think about deen. कि मशवरे में बैठने से एक तो उसकी फिक्र दीनी बनेगी और दूसरा मशवरे में ये सोचा जाता है कि मुबारक दीन हमारे अंदर और पूरी दुनिया में कैसे जिंदा हो जाए, उसकी मेहनत और फिक्र की बात आती है तो उससे आदमी की फिक्र दीनी और इस्लामी और अल्लाह के दीन की नुसरत वाली बनती है। Person sits in the mashwara in the morning in his masjid, now he's thinking about deen. Well, these thoughts become stronger in his mind. That begins to think now, usually he's thinking about dunya, now he's thinking deen and the demands of deen, how deen can come into my life, how deen can come into the entire humanity till qiyamah. Now, during the day, these thoughts are going through his mind, his fikr is changing. इसलिए रोजाना अपने आप को मशवरे में बिठाना है। So we have to sit every day in the mashwara. और ये सोचना है कि ये मुबारक दीन मेरे अंदर और पूरी दुनिया के इंसानों में कैसे आ जाए। How deen can come into my life and every person in the world, how deen can come into his life. ये हमारे मशवरे में इसलिए सोचना है कि हम आलमी नबी के आलमी उम्मती है। This has come in the mashwara because we are the ummat of that Nabi that has come for the entire humanity.
इसलिए सब नियत करो कि इंशाल्लाह हम अपने फिक्र को खराब नहीं होने देंगे, रोजाना मशवरे में बैठेंगे। Therefore, we all make a decision that I will not allow my fikr to be spoiled. I will sit every day in the mashwara to make my fikr correct. बैठोगे इंशाल्लाह? Inshallah, I will sit कौन every कौन day. बैठेगा? Who will sit inshallah? दूसरा काम क्या करोगे? The second amal, the second action we have to do. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, अल्लाह ने अपने नबी को कू अनफुसकुम, अपने आप को की हिफाजत करो, व अहलीकुम, दूसरा हुक्म ये दिया जो फिक्र तुम अपने लिए कर रहे हो अपने घर वालों के लिए भी करो। तो हम भी अपने घर वालों की दूसरे नंबर पर फिक्र करेंगे। Nabi alayhi salatu wasalam was commanded in the Quran Sharif, Qu anfusakum, Nabi of Allah, save yourself. And together with that, save your family from the fire of Jahannam. How to make fikr for our families? हमें क्यों उनकी फिक्र करनी है? Why to make fikr? Why to worry about our उनकी families? फिक्र इसलिए करनी है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तो तुम अपने घर वालों की फिक्र करो, और एक जगह फरमाया कि हर बड़ों से उनके मातहत का सवाल होगा, वो हमारी मातहती में है, उनका सवाल कल कयामत के दिन हमसे होगा। Because we are made to understand that every responsible person will be questioned on the day of Qiyamah for those that are under him, for those that he is responsible for, his family, he has responsibility. Therefore he will be questioned about them, therefore he has to make fikr and concern about them. उनकी क्या फिक्र करनी है? What fikr to make for तो them? उनकी फिक्र ये करनी है कि वो जिस हल में है उस हल में अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए, अल्लाह को राजी करते हुए वो जीने वाले बने। To have this concern about our families, whatever condition they're living in, to live in such a way, fulfilling the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, to please Allah subhanahu wa ta'ala. देखो हाफिज बनना सबके ऊपर फर्ज नहीं, वो फर्ज किफाया है। To become a hafiz al-Quran is a farz upon everyone. It's farz kifaya. If you become hafiz, responsibility is fulfilled. मौलवी साहब बनना सब पर फर्ज ऐन नहीं है, वो भी फर्ज किफाया है। To become an alim of deen also is a farz upon everyone. Few people do it, alhamdulillah. लेकिन दीनदार बनना सब पर फर्ज है But to become pious, to become conscious of deen, this is farz upon every single person. कि हर आदमी अपने अपनी लाइन में अल्लाह को राजी करे, वो किसी तरह से भी अल्लाह को नाराज न करे। That a person, whatever line of life he is now, to fulfill the command of Allah, to ensure that whatever line of life I am right now, my Allah becomes happy, I do not displease my Allah. इसकी शुरुआत हमें सबसे पहले फिक्र अपने घर वालों की करनी पड़ेगी। So I have to be concerned about my family also. अगर नहीं की तो क्या होगा? If I don't worry about my family, what will happen? हजरत शेख ने फजाली की किताब में लिखा है कि हर आदमी की औलाद या तो उसके लिए जन्नत है या जहन्नम है। The Shaykh has mentioned that every person, his family, his children, is either his Jannat or his family is his Jahannam. और फरमाया अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, कि तुम में हर आदमी जिम्मेदार है, उससे अपने मातहतों का सवाल होगा। Nabi alayhi salatu wasalam said, listen carefully, every one of you is a shepherd. You are responsible for your flock. You have a family, you are responsible for your family. Qiyamah day Allah will ask you about your family. तो घर वालों की फिक्र कैसे करेंगे? How to worry about our family people? घर में जाकर बटन दबा देंगे तो सब दीनदार बन जाएंगे। So do I go home now, there's a button there, I press the button, they all become pious? हो जाएंगे ना? Will happen? तो फिर कैसे करेंगे? So how will I do it? का घर वालों की जो फिक्र बनेगी वो घरवाली से बनेगी। How will the environment change? How deen will come in the home through the wife in the house. She will bring deen in the house. उसको कहते हैं घर वाली, वो घर की वाली होती है, वहां उसी का चलता है, हमारा नहीं चलता है। That's why in Urdu he says she's Gar Wali. She's in charge of the house. Whatever she says in the house, that will happen, not what you say. आपको बुरा लग गया ना? Gee, you're feeling bad about it. उसी की चलती है। So whatever she says happens. अच्छा बताओ, हमारे घर में लड़का लड़की है, लड़के का रिश्ता आया, वो चाहती है कि ये रिश्ता तय कर देना है, हम चाहते हैं कि नहीं करना, तो वो रिश्ता होता है या नहीं होता? पूछो। This proposal comes now for our daughter in the house. But we are not happy with it, but she wants it. She's happy with that proposal. That now whose decision will be final? Who will make the decision? Was yours or the wife's? बोलो होता है या नहीं होता? होता है। किसकी चली? Gee, whose decision was final? अच्छा हमारे घर में रिश्ता आया, हम चाहते हैं हो जाए, वो चाहती है ना हो, तो हो जाएगा वो? पूछो ना भाई। Gee, so the proposal comes now, that whose decision will be final? What we want or what she wants? What she wants? बहुत कम होंगे कि जो उसके अलावा हो, वरना तो उसी के घर में चलती है। Just you have a few now where the man's word will go, but more than often is the woman. हमारे हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एक मर्द का बनना और एक औरत का दीनदार बन जाना एक नस्ल और एक खानदान का बन जाना है। Hazrat Ji would say, rahmatullah alayhi, that one man becomes pious, he became pious. But a woman becomes pious, the entire family, entire generations will become pious. और फरमाते थे मर्द का दीन दरवाजे की चौखट तक, और औरत दीनदार बन गई तो वो दीन घर के अंदर तक। The man's dindari and piety, he brings deen to the front door of the house.
That's where it will stop. But the woman now she'll take it into the house. तो औरत के बनने से घर बन जाता है. The woman becomes pious, the entire house will become pious. बच्चे माँ की बोली बोलते हैं, बाप की नहीं बोलते. Gee, the children, they speak now what the mother tells them, not what the father tells them. आप किसी को पूछते हो कि तुम्हारी जबान कौन सी है, तो क्या पूछते हो? When you ask somebody now, what is your language? How do you ask him? कि तुम्हारी फादर टंग कौन सी है, ऐसा पूछते हो? Do you ask him what's your father language? क्या पूछते हो? What do you ask? अरे बोलो ना. तो क्यों मदर टंग क्यों पूछते हो? बाप की जबान कोई अलग है? So why do you ask mother tongue? Is your father's tongue different? उर्दू में पूछते हैं कि तुम्हारी, फारसी में मादरी जबान. गुजराती वाले यहाँ बैठे हैं, पूछते हैं तुम्हारी मातृभाषा. कोई ऐसा पूछता है तुम्हारी पितृभाषा? बोलो जी. In different languages also, they will ask you in that language too, whether it be Farsi, Persian or being Gujarati, what is your mother language? Nobody asks in any language in the world, what is your father language? अरबी में पूछते हैं लोगतुल कोई ये नहीं पूछता लोगतुल अब. The Arabic also, they ask you Lughatul what is your mother language? What's your father language? Why? कि बच्चे माँ के असर लेते हैं. Because the children take effect from the mother. एक हमारे बुजुर्ग बात कह रहे थे कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है. Pious person says that the first madrasa of the child is the mother's lap. एक साहब बैठे थे कि गलत कह रहे हैं ये. So somebody said, no, it is wrong. तो फिर सही क्या है? So what is correct thing? का माँ का पहला मदरसा माँ का पेट है, बच्चे का पहला मदरसा. The first madrasa of the child is the womb of the mother. वो कैसे? How is it possible? कि ये पेट माँ का पेट बच्चे के लिए बनने की जगह है. Because the womb of the mother is a place where the child is formed. ये डाई है, डाई. This is the डाई, सांचा. So, yeah, this is the model. फरमा. Is the model. ये जैसा होगा ऐसा बच्चा बनेगा. अगर ये हया वाला है, ये तकवे वाला है, ये अल्लाह के डर वाला है, ये अल्लाह के खौफ वाला है, उसमें जो बच्चा बनेगा कैसा बनेगा? So the womb of the mother is the mold for the child. This mold, in this mold of the child of the mother's womb, there's taqwa in there, there's piety in there. The mother has modesty in her. It's within her. This is how the child will be molded and come out into the world also. अगर ये पेट खराब हो गया, बेहयाई, बेशर्मी, गंदा देख रही है ये माँ, जिसके पेट में बच्चा है, कान से गंदा सुन रही है, जबान से गंदा बोल रही है, और उसके पेट में बच्चा बन रहा है, और अब्बा दुआ करते हैं, मौलवी साहब हमारी बीवी उम्मीद से है, दुआ करना अच्छा बेटा हो जाए, और उसकी उस औरत आंखों से गंदा देख रही है, गंदा सुन रही है, वो बच्चा कैसा होगा? So this mold of the mother's womb is such now, she's looking at haram things also, she's speaking haram, she's listening to haram things, things that are displeasing to Allah subhanahu wa ta'ala, then this inside has become kharab and spoiled. A person can make dua that Allah ta'ala gives me a pious child, but right now what's being imported into the womb of the mother is not piety. So the child will come out, what's within the mother, is how the child will be born into this world. हमारे एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, औरत मर्द से ज्यादा नेक होनी चाहिए. That's why ulama say that the woman has to be more pious than the husband. तो ये औरत में नेकी कहाँ से आएगी? Where will this piety come to this woman? क्या वो मर्द की फिक्रों से आएगी? This will come to the concern of the man. मर्द अपनी फिक्रों में अपनी औरत को शरीक करे. So when he has a concern for deen, now he makes a partner in this fikr and this concern of his. हम अपने सारी बातों में अपनी औरत से शेयर करते हैं. Everything we share with our wives. लेकिन अपने दीन की बातों में हम उसको कोई शेयर नहीं करते, उसको अपनी फिक्रों में शरीक नहीं करते हैं. When it comes to a fikr of deen, this is where we don't share with them. We keep it to ourselves. इसलिए सबसे पहली बात कि हमें अपने दीन की फिक्रों में उसको शरीक करना है. Therefore we make a partner in our deeni fikr also. अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अपनी फिक्रों में अपनी अज़वाज मुतहहरात को शरीक कर लिया. Nabi alayhi salatu salam in his deeni fikr, he also made the azwaj mutahharat a partner in this, his wives, blessed wives. साहबा फरमाते हैं आधा दीन हमको अम्मी जान हजरत आयशा से मिला. Sahaba ikram say half of deen we learned from Aisha radiyallahu ta'ala anha. सबसे ज्यादा माल हजरत खदीजा का इस्तेमाल हुआ कि वो सबसे ज्यादा मुआविन बनी हमारे नबी को. And the most amount of wealth that was spent upon the deen of Allah was the wealth of Khadija radiyallahu ta'ala anha. सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें लेकर निकाह में आई थी, सब माल अल्लाह के नबी पर लगा, वो मददगार बनी है. Loads of gold and silver she spent in the path of Allah upon the deen of Allah tabarak wa ta'ala. उसको अपनी फिक्रों में कैसे शरीक करेंगे? How to make them a partner in our fikr. रोजाना उसके साथ लड़ेंगे. So we must fight with them every day. बराबर है. To fight with them? वो लड़ने का रिश्ता नहीं है. No, is it to fight with them? वो लड़ने का रिश्ता नहीं, हमारी नस्ल उससे चलती है, वो संभालने का रिश्ता है. जी, our connection with the wives is to fight with them. लड़कर तो कोई फिक्र में शरीक होता है? Does anybody have a partner in fighting? लड़ने से तो नफरत होती है. By fighting now, this hatred and अल्लाह के abhorrence. नबी अलैहि सलाम उनको अपनी बातों से, अपने अमल से, अपनी फिक्रों में शरीक करते थे. Nabi alayhi salatu salam would make the zawj mutahharat, his blessed wives, a partner with him in उनसे his मस्ती amal. करते थे.
उनसे मजाक करते थे। He used to joke with them, he used to laugh with them. एक मरतबा काफिला आ रहा था तो अम्मी जान से कहा, आयशा रदी अल्लाह अन्हा से फरमाया तो मेरे साथ दौड़ लगाओगी? कजी लगाएंगे। साहबा से कहा चलो सब आगे चले जाओ। अब अम्मी जान और अल्लाह के नबी ने दौड़ लगाई तो अल्लाह के नबी भरी थे, पीछे रह गए, अम्मी जान आगे निकल गई। Nabi alayhi salatu wasalam was out in the qafla and the travels with Hazrat Aisha radiallahu anha, and they also now he challenged, let's have a race. Let's have a race now, and Nabi alayhi salatu wasalam raced with Aisha radiallahu ta'ala anha. एक मरतबा फिर फरमाया कि दौड़ लगाओगी? Then the second time also he asked, will you race with me? कजी हाँ लगाऊंगी। She said, Ji, I'll race तो with you. फिर दौड़ लगाई, हजरत आयशा भरी थी, हमारे नबी आगे निकल गए। फरमाया कि उसका बदला हो गया। So the first time was Aisha beat Nabi alayhi salatu wasalam, the second time he beat her because she became a bit now heavyweight. So Nabi sallallahu told her, see, I beat you this time. उनका नाम था आयशा। Her name तो was प्यार से Aisha. फरमाते थे या हुमैरा, ऐसा बोलते थे प्यार से। Nabi sallallahu alaihi wasallam would love, had a pet name for her. He would call her Ya Humayra, or the red one with red cheeks. और ऐसे घुल मिल जाते थे घर में। अम्मी जान फरमाती है कि हमसे ऐसे घुल मिल जाते थे कि हमको ऐसा लगता था कि हमें कभी छोड़कर जाएंगे ही नहीं। The Nabi alayhi salatu wasalam used to be so loving within the home as if now he would never leave us. और जब अजान होती थी तो ऐसे चले जाते थे कि गोया हमको पहचानते ही नहीं। When Azan used to go, Nabi alayhi salatu wasalam's face used to become such like he never knew us. सबसे पहला अल्लाह ने दुनिया में यही रिश्ता बनाया, मियाँ बीवी का, आदम और हवा को बनाया। Allah Ta'ala, the first connection Allah Ta'ala made in this worldly life is between husband and wife, between Adam and Hawa. और आखिर में जो हमारे साथ रिश्ता बाकी रहेगा वो बीवी का रहेगा। हम अपनी बीवी के साथ जन्नत में जाएंगे। And also the last connection we'll have also is with the wife in Jannat also. हम रोज उससे लड़ते हैं, But we fight with them every day. छोटी छोटी बात में लड़ते हैं। Small things we fight with them. बल्कि हम तो फख्र से कहते हैं मजाले में घर में जाऊं कोई जरा भी चूंचा करे And we say also with our chest out, anybody makes any problem at home, I'll show them. तो ये घर में जाकर इस तरह रहना, ये शोहर नहीं है, ये बाप नहीं है, ये तो पुलिस वाला है, थाने वाला है। You say now to be in the house like that now with your chest out and to make people afraid, then you're a policeman at home, you're not a husband. हमारे नबी अलैहिस्सलाम तो घर में बच्चों से खेलते थे। Nabi alayhi salatu wasalam used to play with the children in the house. घोड़ा बन जाते थे, घोड़ा, और हसन हुसैन को यहाँ बिठाते थे और घर में गोल गोल यूं चक्कर लगाते थे। Nabi alayhi salatu wasalam used to go on all fours like a horse, and he would take his grandchildren Hassan Hussein, put them on his back, and he would ride around the house like that. अल्लाह के नबी की नवासी थी उमामा, उसको यहाँ बिठाते थे और बाजार लेकर जाते थे, यहाँ बिठाकर। इतने बड़े बुजुर्ग आदमी यहाँ बिठाकर बाजार जाते थे। Nabi alayhi salatu wasalam had a granddaughter Umama radiallahu anha, he would put on his shoulders and like this he would go to the bazaar and he would walk with her. घर में Such a Nabi of Allah. घर में हसन हुसैन से फरमाते थे रदी अल्लाह उनमा से, चलो कुश्ती लड़ो। तो दोनों कुश्ती लड़ते थे। तो एक जीत गया, शाबाश शाबाश। तो उनकी अम्मी कहने लगी आप उसको शाबाशी देते हो, इसको नहीं देते। कहते देखो जिब्राइल खड़े हैं, वो भी उसको शाबाशी दे रहे हैं। Hassan Hussein radiallahu anhuma used to have a wrestling match in the house, and one used to floor the other one. So the one that used to win, Nabi alayhi salatu wasalam used to tell him, Shabash, you did very well. हुजूर नमाज पढ़ते थे। So then Hazrat Fatima was asking me, he didn't tell him also. He said, oh, Jibril alayhi salatu wasalam is telling him, Shabash, you did very well also. हुजूर नमाज पढ़ते थे तो हसन हुसैन गोल गोल घूमते थे, यहाँ नीचे से गुजर जाते थे, यूं यूं आवे फिर यहाँ गुजर जावे। Nabi alayhi salatu used to be performing salah in sajda, and his grandson Hassan Hussein used to be going in and out of Nabi Ali, over his back and through him again like this. He used to play with Nabi alayhi salatu हम नमाज wasalam. पढ़े ऐसा बच्चा करेगा तो क्या करेंगे? If we're reading namaz at home like this and the children come and play in front of us, what will we do to them? उसको भी पीटेंगे, उसकी माँ को भी पीटेंगे। He said, we will hit the child and the mother too, we hit the mother also. क्यों? Why? कि हमने घर का दीन नहीं सीखा। Because we didn't learn how to be pious in our homes. हमारे वहाँ एक बुजुर्ग गुजरे हैं, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सीरत आयशा लिखी है। ये सारी बातें हजरत ने लिखी। Sayyid Sulaiman Nadwi Rahman wrote a kitab on the seerat and the life of Aisha radiyallahu ta'ala anha. तो घर में जो घर बच्चे हमसे कवर होंगे वो प्यार मोहब्बत वाले माहौल से। So at home now with our children and family should show them love and muhabbat. हम घर में ऑडिट करते हैं, जाते ही ऑडिट शुरू हो जाता है। नमाज पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, स्कूल गया था नहीं गया था। हमारा टॉन बाय ऑर्डर हो गया, उससे हम में और बच्चों में नफरत हो गई। When we go home now, see we go like auditors. You're auditing at home. You read namaz, you did this, you did that. Yeah, we're commanding and demanding. You see, we're no more husbands and fathers at home now. उसका असर क्या हुआ? What is the effect of this? हम यहाँ से दाखिल होते हैं, बच्चे वहां से निकल जाते हैं। That we enter from one door and the children leave from the back door. और हमारी तबलीग अपनी बीवी में भी नहीं मुंतकिल होती, हमारे बच्चों में भी मुंतकिल नहीं होती। So this tabligh has to come into our lives, no into our children's lives. हमारे एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, अपने बच्चों को दोस्त बनाकर संभाल लो, वरना बाहर लोग उनको दोस्त बनाकर बर्बाद कर देंगे। Our Kabir said that make our children our friends and keep them close to the deen of Allah, or else outside people will take them away and make them close to the wrong things. इसलिए सबसे पहला उनके साथ अच्छा रहना, उससे बच्चे हमारी फिक्रों में शरीक होंगे। So we live with them in an amicable way and make them a partner in our deen. दूसरा, हमारे बच्चों में और बीवी में दीन लाने के लिए दूसरा क्या काम करेंगे?
What's the second thing we'll do now to bring deen into our homes? कि दूसरा घर का माहौल बनाएंगे. एक तो अच्छे रवैये से पेश आएंगे, दूसरा अच्छा माहौल बनाएंगे. And we'll go with good character in our homes. It will make a good environment in the houses. इसीलिए मर्दों के लिए नफल सारी इबादत घर में अफजल है. Therefore, for the man also, is more virtuous for him to do his nafil ibadat in the house. क्यों? ताकि उससे घर का माहौल बने. So by his nafil ibadat, there will be a whole environment in the house. घर में मोबाइल का माहौल है, सबके हाथ में मोबाइल. जब अमाल का माहौल घर में बनेगा तो सब अमाल वाले बनेंगे. So now in the house, it's become environment of mobile phone. We are using it, so the mahol has become like that. We will change it now, bring nafil into the home. That will be the environment. तीसरा घर का माहौल बनाने के लिए क्या काम करेंगे? Third thing, to make the environment in the house. हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं रोजाना फजाइल की तालीम की जाए, फजाइल अमाल, फजाइल सदकात की तालीम की जाए. Every day do the amal of ta'aleem, fazail amal, fazail sadaqat. क्यों? Why? ये किताब वो है जिसमें ईमान वाले को अल्लाह ने जो दीन के 5 शोबे बनाए हैं, ईमानियात, इबादत, मामलात, मुआशरत और अखलाकियात, इन 5 शोबों में ईमान वाले को कैसे रहना, वो जिंदगी उसमें लिखी है. So in this kitab, Allah Ta'ala, as the Shaykh has mentioned this kitab, the 5 branches of deen, to these 5 branches of deen will come in the home. In the kitab is mentioned about iman, then about akhlaq, our character, then ibadat, how to worship Allah Tabarak wa Ta'ala, muamalat, muasharat, social interaction, business dealings. All these are mentioned in the Fazail kitab. We'll read this. All these 5 branches of deen will become alive in the house. हमारे घर आखिरत के मुज़ाकरों से खाली हो गए. 24 घंटे में 5 मिनट अल्लाह रसूल की बात हमारे घर में नहीं होती. Our homes have become empty of the mudhakara and speaking about akhirat. We're speaking about everything besides akhirat. इसलिए हम इसको संजीदगी से लें कि इस फितनों के माहौल में हमारे घर से हमारे बच्चों को दीन मिलना चाहिए. In this time of fitna, take it upon our hearts that our children have to have deen into their lives. इसके लिए एक तो अच्छे रवैयों से उनके साथ पेश आना. So we present ourselves to them with good character. दूसरा घर के माहौल को बनाना, अमाल से घर को भर देना. Then to change the mahol in the house, the environment of the house through amal. और तीसरा इन किताब के जरिए से बच्चों का दीनी ज़हन बनाना. And then to make the minds of our children deeni by reading the kitabs of deen. तो इंशाल्लाह हमारे जीते जी हमारी औलादें दीनदार बन जाएगी. So inshallah our children now in this worldly life will become pious. करोगे इंशाल्लाह? We'll do this inshallah. कौन कौन घर जाकर लड़ेगा? You will do it inshallah. We'll go. पूछो जी. As I ask you, who'll go home and fight with the wife? कौन कौन लड़ेगा? Who'll fight at home? तो इंशाल्लाह हम अपने घर की फिक्र जरूर करेंगे. So we all will make fikr and concern at home how to change the environment inshallah. करोगे घर की फिक्र? जी we'll make fikr. कौन कौन करेगा? जी who'll do it inshallah. घर को टाइम दो. बोलो घर को टाइम देना है. जी give time at home also. हम घर में जाकर भी मोबाइल में लग जाते हैं. We go home now, we start with the phone at home. जितना मोबाइल का काम हो घर के बाहर कर लो. Whatever cell phone work you have, do it out of the house. घर में मोबाइल बंद. Close the mobile and the phone अगर at home. हम मोबाइल में हैं, बीवी मोबाइल में है, फिर हम बच्चों को कहे मोबाइल इस्तेमाल मत करो, कैसे होगा? If we on the phone, the wife on the phone, how can we tell the children now don't use the phone? तो हम जो चीज बच्चों से करवाना चाहते हैं वो हमें करनी पड़ेगी. What you want the children to do, we have to do also. इसलिए सब तय कर लो कि घर में मोबाइल बंद. So we all make the decision that no more using mobile at home, no more using. कौन कौन घर में बंद कर देगा? You who close it at home now, no more. ये घर का टाइम बच्चों का और बीवी का है. This is the time for your children and your family. दोगे इंशाल्लाह टाइम घर वालों को? जी will give them time inshallah. कौन कौन देंगे? You will give time at home properly. ऑडिट नहीं करनी घर में. There is no need to make an audit of the home. What's happening, the accounts. तो एक क्या अपनी फिक्र की और एक घर वालों की फिक्र की. So now we had fikr and concern for ourselves and our family people. यही फिक्र पूरे मोहल्ले वालों की करनी है. So now the same fikr we're going to make in the entire locality. क्यों करनी है? Why? इसलिए करनी है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह ने तीसरा हुक्म ये दिया, अपनी फिक्र करो, घर वालों की फिक्र करो, फिर कि अपने खानदान वालों की फिक्र करो. वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन. Why to make fikr for the people of the locality? Nabi alayhi salatu wasallam commanded that save yourself, save your family, and also warn your extended family members also that stay in your locality. Take care of them also. अगर मोहल्ले वालों की फिक्र करेंगे तो क्या फायदा होगा? By making fikr and concern and worrying about the people of our locality, what will be the benefit? कि मोहल्ले वालों की अगर फिक्र की तो 2 नफे होंगे. So if we will worry about the people in our locality, there will be 2 benefits. एक हमारे जिम्मेदारी है वो पूरी होगी कि हमको उनका जिम्मेदार बनाया गया है, उनके दीन का जिम्मेदार बनाया गया. First of all, our responsibility will be fulfilled because we have a responsibility to carry the deen to every person. और दूसरा फायदा ये होगा जब मोहल्ले वालों की फिक्र करोगे तो जिस तरह तुम्हारा घर दीनदार बना पूरा मोहल्ला दीनदार बन जाएगा. When we will have concern for the people of locality, just like how our environment at home is made, the entire locality's environment will be made. तो फिर इंशाल्लाह हमारे घर में कहीं से बेदीनियत नहीं आएगी. Then because of this, no bedini,
no bedini will come into our homes. Deen will remain, and deen not leaving, this will not happen. अगर हमारे घर में दीनदारी है और हमारे अतराफ में बेदीनी हुई तो वो बेदीनी आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर में आ जाएगी. If they have deen only in our homes and around us is no deen, then slowly this non-deen environment will come into our homes also. देखो नहीं, ये बाल की कटिंग और कपड़ों की कटिंग पता नहीं कहाँ हुई है और यहाँ आ गई, तो हमारे मोहल्ले की बेदीनी हमारे घर में नहीं आएगी. You see this different hairstyles and different types of fashion and style, where it came from. Our homes possibly had piety, but it came from somewhere and came into our homes. तो मोहल्ले के लिए हम क्या काम करेंगे? So what we will do in our localities? कि जो तालीम हमने घर में की वही तालीम हम रोजाना मस्जिद में करें, ताकि हर ईमान वाला उस तालीम को सुने. So same ta'aleem that we made in our homes, now we'll make ta'aleem in the masjid, so every single person can listen to the ta'aleem. कि ईमान वाला अपने जिंदगी के इन पांचों शोबे में कैसे रहे उसको पता चलना चाहिए. So every single believer knows how to live his life in the 5 branches of deen. He will learn through ta'aleem. उसमें ईमानियात की तालीम है. So this ta'aleem of imaniyat. What is iman? इबादत के पांचों अरकान की तालीम है. ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, पांचों अरकान की तालीम है. वो कैसे होने चाहिए? When it comes to ibadat also now, how to worship Allah subhanahu wa ta'ala, it comes to salah and all the branches of deen, he knows how to make amal upon this. फिर मुआमलात की तालीम है कि हलाल खाओगे तो क्या होगा और हराम पेट में जाएगा तो क्या होगा, किसी की जमीन दबाओगे तो क्या होगा, ये तालीम है उसमें. Then the ta'aleem of muamalat, when it comes to his business interaction, that to eat halal, not to hurt anyone, not to take anybody's right, he will learn all these things. फिर माशरत की तालीम है. Then it comes to social interaction. अम्मी का क्या हक है, अब्बा का क्या हक है, भाई बहनों का क्या हक है, पड़ोसी का क्या हक है, जानवरों का क्या हक है. What's the rights of our parents, of our wives, our family members? What's the rights of animals also we will learn. और अखलाकियात की तालीम है. And then the ta'aleem of akhlaq. इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि ऐसी नमाज के बाद तालीम करो कि मोहल्ले के मुसल्ली बैठ सकें, उसमें ज्यादा से ज्यादा शरीक हो सके. ऐसे वक्त में ऐसी नमाज के बाद तालीम करो. That's why our Kabir say that I have ta'aleem in the masjid such a time where most of the people are free and they can sit for ta'aleem. और कोशिश करो कि सारी किताबों में से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ताकि सारी चीजें रोजाना हमारे मुसल्लियों के जहन पर पड़े. And also in the ta'aleem, read from every section little bit, not too much, little bit, that we can cover all the branches of deen. इसलिए अब खुद भी तालीम में बैठना है और सारे मुसल्लियों को बिठाने की मेहनत कर रही है. So I got to sit in the ta'aleem and make an effort now for all the musallis to sit in the ta'aleem. इसलिए सब नियत करो कि हम भी बैठेंगे, सबको बिठाएंगे. So we all make intention, inshallah, I will sit and I'll make an effort now for all to sit. कौन कौन मेहनत करेगा? खुद भी बैठेगा, सबको बिठाएगा. Ji, who will make the effort, inshallah. अल्लाह कबूल फरमावे. Allah ta'ala accept. मोहल्ले का माहौल बनाने के लिए और क्या काम करोगे? Now after we've made the environment in the locality, what we will do next? का उसके लिए हम रोजाना अपनी मस्जिद से जो फिक्रें हुई है वो लेकर हर मोहल्ले के हर घर के पास जाएंगे. So whatever fikr and concern we had in the masjid now, from the masjid now we'll go to every home and put it in every house. कैसे जाएंगे? How we will go? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि उसके लिए हर मस्जिद का मुसल्ली रोजाना 2.5 घंटे अपनी मस्जिद को दे. कम से कम 2.5 घंटे दे. So Kabir said to do this now, every one of us has to give 2.5 hours to our masjid. वो 2.5 घंटे हम कहाँ से लाएंगे? Where we going to get 2.5 हम hours तो from? बहुत मशगूल लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, कहाँ से लाएंगे 2.5 घंटे? We are so busy now in businesses. Where do we get the time? क्या ये गलत बात है कि हमारे पास 2.5 घंटे नहीं है? हम सबके पास 2.5 घंटे है. Gee, we all have 2.5 hours. We can give it. वो कहाँ है? Where's the 2.5 hours? भाई दिन 24 घंटे जो हमारा एक दिन होता है कितने घंटे का होता है? Gee, in one day how many hours? बोलो ना, 24 घंटे का. आप कारोबार कितने घंटे करते हो? How many hours you do business? जी 8 घंटे. और चलो 8 घंटे हम गिन लेते हैं. 8 घंटे कारोबार के. आराम कितने घंटे करते हो? How many hours we sleep? अरे बोलो भाई, 6-7 घंटे. चलो 7 घंटे गिन लो. कितने हो गए? 8 और 7 15. और दिन कितने घंटों का है? 24. 15 घंटे हो गए. कारोबार का वक्त आपको मुबारक. आराम आप कर लो. कितने घंटे बचे? 7 घंटे बचे. वो कहां दोगे? रोजाना हर आदमी के पास 7 घंटे बचते हैं. वो हम कहां देते हैं? हमारे हजरात फरमाते हैं उसमें से कम 2.5 घंटे रोजाना अपनी मस्जिद को दो. So 8 hours you are giving to business. 7 hours you can say to our rest and our sleep. That's 15 hours. 7 hours are left. Where are we giving the 7 hours to? And the 7 hours we can take out 2.5 hours and give to the deen of Allah tabarak wa ta'ala. उसमें हम क्या करेंगे उस 2.5 घंटे में? What will we do in the 2.5 hours? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं उसमें अपने मोहल्ले वालों की फिक्र करो. And the 2.5 hours now, Buzurg say, we will take care of our people of the locality. क्यों? Why? कि हमारे जिम्मे उनकी फिक्र जिम्मेदारी है. Because we have a responsibility to look after them, to worry about them. जो दीनी फिक्र हमारी बनी, जो हमने अपने घर वालों की बनाई, हम अपने पूरे मोहल्ले वालों के लिए भी वही चीज पसंद करेंगे.
What we like for ourselves, the concern we had for ourselves, our family people, so too we love the same thing now for the people of our locality. हमारे नबी ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो पसंद न करें जो अपने लिए पसंद करता है. Nabi alayhi salatu wasalam said more or less, you cannot be a perfect believer until you don't love for your Muslim brother what you love for yourself. उस 2.5 घंटे में हम क्या करेंगे? So what we'll do in the 2.5 hours? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो मोहल्ले के मकानात है उसमें मुलाकातों में जाओ. So we'll go in the locality and meet the people of the locality. और ऐसी मुलाकात का निजाम बनाओ कि कोई मुलाकात से घर न छूटे और कोई घर का कोई फर्द न छूटे. So such a system we make now that no house will be left out and no single person will be left out. We'll meet everyone. वो कैसे होगा? How will that happen? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं मस्जिद के अतराफ के मकानों को गिनो, कितने मकान हैं. मस्जिद और जमात उसको अपने अंदर डिवाइड कर लें. मसलन 12 आदमी मस्जिद और जमात में बैठते हैं तो 200 मकान है, तो ये 12 आदमियों की 4 जमात बना लो, 3-3 की, और 50-50 मकान के 4 ब्लॉक बना लो. ये 50 आपके, ये 50 आपके, ये 50 आपके, ये 50 आपके. तो इस तरतीब पर सारी मस्जिद और जमात का इस्तेमाल होगा और मोहल्ले के सारे घर मेहनत के अंदर तकसीम हो जाएंगे, सारे मेहनत का मैदान बन जाएंगे. So how we'll cover our locality? We will count the number of homes around the masjid. Example, 200 homes we have. We have 12 brothers in the masjid. We divide it now, 4 brothers in each jamaat, and we'll cover all these homes. Divide the homes between the brothers, and this will cover the entire area. और मेहनत कैसे करेंगे? How we'll make the effort? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कोशिश इस बात की करो कि तुम जिस घर की मुलाकात में जाओ उस घर में बैठकर बात करो. They say when you go to a home, sit in the house and speak to the men. क्यों? Why? क्या आप अपनी फिक्र में घर के सारे लोगों को शरीक करना चाहते हो? Because you want the people of the house to also be a partner with him. You sit in the house and talk to them. जब तुम घर में बैठकर बात करोगे तो उस घर के जितने मर्द हैं तुम्हारे सामने आ जाएंगे, सब तक आपकी बात पहुंच जाएगी. So when you enter the house, you will sit with the men of the house and all will come and sit with you. So they all will get now this fikr and concern in their hearts too. और उस घर की औरतें जो है उन तक भी इंशाल्लाह आपकी बात पहुंच जाएगी. And even the ladies in the house, whatever fikr you are putting to the men, they will also get this fikr. कैसे? How this will happen? इस तरह पहुंचेगी कि औरतों की फितरत में है, आदत में है कि जब बाहर का कोई आदमी आकर बात करता है ना तो वो चुपके चुपके सुनती है कि क्या बात हो रही है, तो तुम जरा जोर से बोलो, 6 नंबर के अंदर बात करो. जब तुम इस तरह बात करोगे ना तो इंशाल्लाह तुम्हारी आवाज उन तक भी पहुंचेगी, तो जो फिक्र तुमने मर्दों को दी वो उनकी औरतों तक भी पहुंच जाएगी. So how will your fikr now go to the ladies in that house you are sitting there? It is the habit of masturat and ladies. Any person comes into the house, then they will listen from behind the curtain, behind the wall, what they are talking about, who came, who's the mehman, who's the guest. So what you do now, you raise your voice a little bit louder and you speak only the 6 points. So they'll be hearing also. So whatever fikr you are putting forward, they will hear it, it will come into their heart too. उनसे 6 नंबर के अंदर बात करो, घर का माहौल बनाने की बात करो, बच्चों की दीनी जिम्मेदारी की बात करो, घर में तालीम के नफे की बात करो. ये सारी बात आप करो, वो घर के मर्दों तक भी बात पहुंचेगी, घर की औरतों तक भी बात पहुंचेगी. So now we will give da'wah to speak about the 6 points, the responsibility of children and talim in the home and the environment in the home. The men are listening, the ladies are also listening. On that side, the fikr will go to the whole house. अगर उनको आवाज तुम्हारी नहीं पहुंची तो भी पहुंच जाएगी. And even if your voice did not reach the ladies in the house, but your message will reach them. कैसे पहुंचेगी? How your message will reach them? औरतों की दूसरी आदत है, बोलो ना. We will have a second habit, the other habit also. औरतों को दूसरी आदत क्या है? What's the other habit they have? जब कोई बाहर का आदमी घर में आता है और उसको समझ नहीं पड़ती कि क्यों आए थे, तो जैसे ही वो बात करके बाहर जाएंगे तो उनको गुदगुदी होगी, भाई कौन थे, क्यों आए थे, क्या बात कह रहे थे. उन सब मर्दों को पूछना शुरू करेंगे. जब वो पूछेंगे तो ये मर्द कहेंगे मस्जिद से आए थे, ये बात लेकर आए थे, तो सारे मिलकर उन औरतों से करेंगे, तुम्हारी बात उन औरतों तक भी पहुंच जाएगी. So how will your message reach the masturat and the ladies once you leave the house? They have a habit also that they couldn't hear what's happening, they don't know who came, so they'll ask the men now. They're restless, who came, what they said. So now the men have to speak up. Jamaat came in the masjid and they mentioned this and they said this. So now your message will reach them sooner or later. बोलो ऐसा होता है नहीं होता? Does it happen or doesn't happen? इसलिए कोशिश ये करो कि घर पर जाकर मुलाकात करो. Therefore make an effort now, go to every home and sit there and speak to the men. बाज़ मर्तबा हम ये कहते हैं कि हमारे घर छोटे छोटे हैं, Sometimes we say the houses are too small. इसलिए बाहर बात कर लेंगे, ओटले पर बात कर लेंगे, खेत में बात कर लेंगे. Oh, we'll take them outside, speak to them on the farm somewhere or to some restaurant. Chalo, we go speak over there. ये धोखा है. This is a deception. The house अच्छा, is उसी small. घर में बेटे बेटी का रिश्ता है तो वो कहाँ बात करते हैं? Now when somebody comes a proposal to the girl in the house, where they sit outside, or sit inside? कहाँ बात करते हैं? Where they speak? हम जाकर कहें तो सही कि हम आपके घर में बैठकर बात करना चाहते हैं.
So we also now will tell them to sit in your house and speak to you. इसलिए सब नियत करो कि इंशाल्लाह हम मुलाकातों में भी जाएंगे और सही तरतीब से मुलाकात करेंगे. So therefore we make the intention now that we will go and make the mulaqat, we will meet them and meet them in the correct manner. अगर आपने बाजार में एक आदमी की मुलाकात कर ली, उस घर में 10 मेंबर है, तो एक से आपने बात की, 9 आपके हाथ से छूट गए. If you spoke to the person now in the bazaar, in the marketplace, you spoke to only one person. You only addressed him. But you speak to him at home, you got 10 people. और आप तो उस घर के सारे लोगों की फिक्र बनाना चाहते हैं. And you want to make all the people in the house part of your fikr and concern. इसलिए नियत करो कि इंशाल्लाह हम सही तरतीब से मुलाकात को जिंदा करेंगे. Therefore make the intention now, we will revive the mulaqats, how to meet people in the correct way. इस तरह अगर तुम करोगे तो पूरे मोहल्ले में वायरिंग हो जाएगा. वायरिंग. When we will do this now, go home to home and speak to them sitting in their homes, now we are doing the wiring. मौलाना इशरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तुम वायरिंग कर दो, फिर अल्लाह उसको पावर हाउस से जब जोड़ेगा तो पूरे मोहल्ला जगमगा जाएगा, लाइट हो जाएगी. Yusuf Sahib said, Rahmatullahi, when you do the wiring like this, Allah Ta'ala will decide and then the switch will go on for the hidayat, then lights of hidayat will come on in the entire locality. और मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये मुलाकात ऐसे करो कि हर 15 दिन में दोबारा उस घर की बारी आ जानी चाहिए. 15 दिन में एक मर्तबा मुलाकात करो, हर घर वाले की हर 15 दिन में मुलाकात. Haji Mehrab used to say, Rahmatullahi alayhi, that you should meet every person every 15 days. So the area that you have to cover, every 15 days is a rotation. So every 15 days you meet that person again. मिसाल के तौर पर एक जमात के जिम्मे 50 मकान आए हैं, वो रोजाना 3 मकानों की अगर मुलाकात करते हैं तो 15 या 45, इंशाल्लाह 16-17 दिन में एक राउंड पूरा हो जाएगा, फिर दूसरा शुरू हो जाएगा. Person has now 50 homes to go and meet, then every 15 days now he will reach that first house again. If he makes mulaqat like that. इंशाल्लाह अगर ये तुम्हारी 2.5 घंटे की मेहनत शुरू हो गई, सारे तकाजे तुम्हारे शुरू हो जाएंगे. सारे तकाजे, चिल्ले की जमातें बनना शुरू होगी, 4 महीने की जमातें बनेगी, 3 दिन की जमातें बनेगी, सारे तकाजे इस 2.5 घंटे से पूरे होंगे. If you do your 2.5 hours like this, and all the taqazas will be fulfilled, with the 4 months pedal, 4 months chilla jamaats will come out, because you're doing it in the correct tartib in your 2.5 hours. आजकल 2.5 घंटे बयान करने वाले बहुत है, लगाने वाले नहीं है. There are many now to explain the 2.5 hours how to do it, but there are very few that are doing it. इसलिए सब नियत करो कि हम रोजाना 2.5 घंटे लगाएंगे. Therefore we all make niyat, inshallah we give 2.5 hours. कौन लगाएगा? जी. उससे इंशाल्लाह एक तो माहौल बनेगा. First of all, the environment will be made. और तुम्हारे इस चलने फिरने से जितने लोग दीनदार बनेंगे वो तुम्हारे नाम अमल में आएंगे. And to this, whoever will become pious and deen will come into his life, it will be your share in that. ये 3 काम हो गए. 3 काम हो गए. The 3 amal took place एक already. मशवरे में बैठना, One is to sit in mashwara, एक रोजाना की 2 तालीम मस्जिद और घर की, then 2 talim in the और home, तीसरा talim in masjid. माहौल बनाने के लिए रोजाना 2.5 घंटे के लिए फिरना. And then 2.5 hours now to go meet the brothers to make the चौथा environment. काम क्या करोगे? The fourth action, the fourth कि amal. हमारे मोहल्ले की फिजा बने, उसके लिए हफ्ते में एक मर्तबा पूरे मोहल्ले वालों को जमा करके ये जो फिक्र हमारी है वो उनको भरना, उसको गश्त का अमल कहते हैं. Then once a week to get all the people of the locality, gather them together and to put the fikr in them now to make the gush. ये गश्त का अमल खाली हफ्ते में एक मर्तबा रूटीन की कोई चीज नहीं है. This amal of gush, it's not just to walk around the locality. बल्कि पूरे मोहल्ले वालों की वो फिक्र कैसे बन जाए, इज्तिमाई फिक्र, ताकि उस काम में सबकी इज्तिमाई ताकत लगे. उसकी फिक्र बनाने के लिए हफ्ते में एक मर्तबा गश्त करके पूरे मोहल्ले वालों को जमा करके ये सारी बातें उनको समझानी है. So this gush actually lies to gather all the people of the locality to explain to them now to make the correct fikr, so the fikr comes into their heart also. जैसे मोहल्ले के सारे कामों में लोग एक फिक्र हो जाते हैं. अगर मोहल्ले में बिजली चली जाए सारे एक फिक्र हो जाते हैं. मोहल्ले में पानी नहीं आता सारे एक फिक्र हो जाते हैं. मोहल्ले में रोड बनाने का है सारे एक फिक्र हो जाते हैं. ऐसे दीन के लिए पूरा मोहल्ला एक फिक्र कैसे हो जाए, उसके लिए हफ्ते में एक मर्तबा गश्त करना है और पूरे मोहल्ले वालों को यह फिक्र भरनी है, देनी है. So we have to gather people together on the gush, they explain to them what their responsibility is. Like how Mohana explains that there's no light in the locality, the entire community now has a concern, there's no lights or there's no water, or they have to repair the roads. It becomes a whole community figure. In the same way now we have to put this entire figure to the entire community, that deen to come alive and for the environment to change. We have to do a gush for this. ये गश्त का अमल नबियों की मेहनत में सबसे ज्यादा नबियों की मेहनत से करीब तर का अमल है. This gush now is the closest action to the actions of Anbiya alayhimus salatu wassalam. सारे नबियों ने अपने मजमे को समझाने की मेहनत की है. So every Nabi of Allah made the effort to explain to his people the effort of deen. अगर उसमें हम शरीक होंगे ना तो नबियों वाली बड़ी सुन्नत हमसे जिंदा होगी.
Once we will do this, then this biggest sunnah of Anbiya alayhimus salatu wasalam will become alive in our lives. और उसकी बड़ी बरकतें मिलेगी, And great barakat will come in our lives. हम खैर के वजूद में आने का जरिया बन जाएंगे। We become a means of khair and goodness coming into the world. इसलिए एक गश्त हमें अपने मोहल्ले में करना है, So we do gush every week in our उसमें locality. शरीक होना है। You have to be part of this. इंशाल्लाह बड़ी कमाई करके दुनिया से जाएंगे। Gee, we'll have great rewards when you go to the तो akhirah. करोगे गश्त इंशाल्लाह? We'll do this inshallah. कौन कौन अपने मोहल्ले में गश्त करेगा? You who do gush in the localities inshallah. अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah. हमारे मोहल्ले की फिक्र हुई, अपनी फिक्र हुई, घर की फिक्र हुई, हमारे मोहल्ले की फिक्र हुई। Now we had figure for ourselves, our family people and our locality. फिर किसकी फिक्र करेंगे? Now who else is left now? कि हमारे मोहल्ले की फिक्र के बाद हमारे अतराफ के मोहल्लों की फिक्र करेंगे। So the neighboring localities to worry about them now. हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, Nabi alayhi salatu was commanded by Allah tabarak wa अपनी ta'ala. फिक्र करो, That take care of yourself, घर वालों की फिक्र करो, your family also, खानदान की फिक्र करो, your family members फिर extended. मक्के की फिक्र करो, वले तुनज़िरा उम्मल क़ुरा, मक्के वालों की फिक्र करो। And also warn the people of Umm al-Qura, Makkatul Mukarraba, worry फिर about them हुक्म हुआ also. अपने अतराफ के मोहल्लों की फिक्र करो, वमन हौलहा, And even those around Makkatul Mukarrama, man hawlaha, worry about them also. तो वो फिक्र हम भी करेंगे। So we also will have this fikr. हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हफ्ते में एक मरतबा अपने वहां गश्त करो और दूसरा गश्त अपने अतराफ के जो बंजर मोहल्ले हैं जहां मुसलमान हैं वहां भी दीन की मेहनत कोई नहीं है, दूसरा गश्त हफ्ते में एक मरतबा वहां जाकर करो। So one gush will make in our locality, second gush now we go to those localities where there is no deeni activity taking place, we go and lift it up over there. वो कैसे करेंगे? How we'll do this? कि कोई एक दिन तय करो, हमारे सारे साथी जाकर जो फिक्र आपने अपने मोहल्ले के लिए की उस मस्जिद वालों के लिए करनी है। To explain to our brothers in our masjid how we are doing this fikr in our masjid, now we take it to the neighboring locality. लेकिन वो गश्त, दूसरा गश्त हम बंजर मोहल्लों में करेंगे, आबाद मोहल्लों में नहीं। So we go now where there is no deen there, people are scattered. We make fikr over there. उससे इंशाल्लाह हमारे अतराफ भी दीनदार बन जाएगा, So even the neighboring localities will become deendar also. वरना अतराफ की बेदीनी हमारे वहां आएगी। Oh, the Bedini or the people of the neighboring localities will come into our locality. लेकिन अतराफ में जो गश्त करने जाओ, खाली गश्त के जरिए से उस मोहल्ले की बेदीनी दूर नहीं होगी। Just by doing gush in those localities now will not remove this Bedini environment. हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि दूसरा गश्त दूसरे गश्त के लिए नहीं है, बल्कि दूसरा गश्त उस मस्जिद को उन अमाल पर खड़ा करने के लिए जो अमाल तुमने अपनी मस्जिद में शुरू किए हैं वो सारे अमाल वहां जिंदा करने के लिए दूसरा गश्त है। The second gush now is not because of doing a second gush just to go and meet the people. The second gush of Budruk say is to establish those amal we have established in our masjid, to go and establish those amal in that masjid. तो वहां अमाल कैसे जिंदा होंगे? How will revive those amal over there? हमारे हजरात फरमाते हैं कि गश्त के अलावा उस मोहल्ले को तुम अपने मोहल्ले का एक हिस्सा बना लो। So they say that locality, make it a part of your locality. जिस तरह तुम रोजाना अपने मोहल्ले में 2.5 घंटे देते हो, इस तरह पूरा हफ्ता अगर जरूरत पड़े तो वहां 2.5 घंटे के लिए आदमी भेजो। Like how we make it 2.5 hours, we do 2.5 hours our locality. Also during the week, it is a need also, then we do 2.5 hours. They send few brothers there also. अगर पूरे हफ्ते हमारी मस्जिद से वहां मेहनत में रोज लोग जाते रहेंगे तो पूरे हफ्ते में लोग मुतवज्जह होंगे। फिर जब गश्त के दिन हम जाएंगे तो सब लोग हमें मिलेंगे, तो वहां काम आसान होगा। खाली गश्त के दिन जाने से उस मस्जिद में काम नहीं होगा। रोजाना उस मस्जिद को अपनी मेहनत का मैदान बनाना, ऐसे जैसे हमने अपने मोहल्ले को मेहनत का मैदान बनाया। So we'll make that neighboring locality part of our locality, and every day we'll send a few brothers there to do 2.5 hours effort. So the day of our gush, when we will go there, the entire week people now, they were encouraged to come for that gush. When we will go there, it will be easy now to establish the amal in that locality. अगर सही तरतीब से 2-3 महीने वहां इस तरह गश्त किया जाए, पूरे हफ्ते वहां मेहनत करके, तो इंशाल्लाह 2 महीने में 3 महीने में वहां अमल शुरू हो जाएंगे। If we do it like this now for 2-3 months, within 2-3 months the amal we find in our masjid now will be established in that locality. इसके जरिए से इंशाल्लाह हमारी मस्जिद के अतराफ के मोहल्ले जो गैर आबाद है, जहां मुसलमान है और बंजर है, इंशाल्लाह उनके अंदर दीनी बेदारी आ जाएगी। Like this now we will do this effort. That area now where the Muslims are weak, they will become stronger. Our environment will be protected. They'll be protected also. इसलिए नियत करो कि इंशाल्लाह ये दूसरा गश्त भी हम फिक्र से करेंगे। So therefore we make niyat also. We will do that gush with fikr and concern. कौन कौन करेगा? You will do it inshallah. जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो भी करेंगे? Those that haven't lifted their hands, they'll also do it. जी भाई वो भी करेंगे? They'll do it अच्छा also. जरा हाथ उठाओ, कौन कौन दोनों गश्त करेंगे? You will do both the gush inshallah. Lift their hands. माशाल्लाह सभी ने उठाए। Alhamdulillah. ये कितने काम हो गए? See, how many actions already? 4 काम हो गए। 4. एक मशवरे में बैठना, One is the mashwara, घर की फिक्र करना, to make fikr in the home. मोहल्ले में रोजाना 2.5 घंटे देना, 2.5 hours to a locality. और 2 गश्त करना। And the 2 gush. इस सब से इंशाल्लाह हम भी महफूज,
हमारे मोहल्ले में भी दीनी बेदारी आएगी और हमारे जिम्मे जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करने का काम है वो जिम्मेदारी पूरी होगी. With this now, we will be protected, the people in our locality and all those that we have a responsibility to take deen to them, this will be fulfilled also. पांचवा काम क्या करना है? What is the fifth thing to do? का पांचवा काम ये करना है कि अपनी फिक्र और अपने अतराफ के मोहल्लों के बाद हमारे अतराफ के देहातों की फिक्र. Then beyond our neighboring localities, those places now, the outlying देहातों की फिक्र. the people in the villages, to make क्यों उनकी फिक्र करनी है? Why to make figure upon them? तो वो हमारे जिम्मे हैं, हमारे देहात. These are our responsibility also. हमारे बेचारे देहात बहुत काबिल रहम होते हैं. Those are living in those villages, in those areas now, in those rural areas, they also have a responsibility. नहीं, वो बहुत काबिल रहम होते हैं. We have to have रहम खाने mercy. के लायक होते हैं. We have to have mercy upon them. कि बेचारे वो देहात वालों के पास बहुत सारे देहात वो हैं जहाँ मुसलमान है, न मस्जिद है, न मदरसा है, उनके पास दीन नहीं है. Those things in the outlying areas, you take mercy upon them, pity for them, because they don't have madaris, they don't have makatib, they don't have the structures, they don't have masjids. अक्सर लोग जो मुर्तद होते हैं वो देहातों के होते हैं. So most that turn away from deen are from those areas. और हम अगर उसकी फिक्र नहीं करेंगे कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? You don't worry about them, Qiyamah's day, what you will answer to Allah Tabarak wa अबू Ta'ala. बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि दीन में कमी आ जाए और मैं जिंदा रहूं, अयुन कसुद्दीन व अना हई, ये नहीं हो सकता कि मेरी मौजूदगी में दीन में कमी आ जाए. यहाँ तो लोग मुर्तद हो रहे हैं. Abu Bakr used to say that how is it possible that deen, there's a decrease in deen and Abu Bakr is alive, it can never happen. Here we find people in those areas are turning away from deen and we are still living comfortably. It can never happen like that. इसके लिए हम क्या करेंगे? So what will we do about it? कि हर जिम्मेदार अपने साथ एक मुआविन ले और महीने भर मेहनत करके 3 दिन की जमात बनाकर उन देहातों में लेकर जाए. So every responsible brother will make a jamaat around him and he will go for 3 days to those areas over there. हर जिम्मेदार अपने साथ एक मुआविन ले, महीने भर मेहनत करके 3-3 दिन की जमातें लेकर उन देहातों में जाए. So a responsible brother for our masjid now will take somebody with him and for the entire month now he'll make fikr for that locality and then once a month he'll take a 3-day jamaat and go there. अगर जिम्मेदार 3 दिन की जमात में जाएगा तो 3 बड़े-बड़े नफे होंगे. So when his zimmedar Sati will take a jamaat with him for 3 days there will be 3 benefits. क्या नफा होगा? What will be the benefit? कि सबसे पहले खुद में चार्जिंग हो जाएगी. चार्ज हो जाएगा, जैसे मोबाइल चार्ज करते हो ना, डिस्चार्ज होता है तो काम नहीं करता. हम भी डिस्चार्ज हो जाते हैं तो काम नहीं करते. महीने में 3 दिन लगेंगे तो चार्जिंग हो जाएगी. So by 3 days now your iman will become charged up also. क्योंकि तबलीग की मेहनत वो ईमान को बनाने की मेहनत है. Because this effort lies to make your iman. मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि इसका नाम लोगों ने तबलीग रखा, वरना मैं तो इसका नाम तहरीक ईमान रखता कि ईमान को हरकत देता है. When Ilyas Sahib said rahmatullah alayhi that I have kept, instead of keeping the name tabligh of this effort, I have kept the name tahrik iman, such an effort now that will lift your iman up, put it into movement. और जब ईमान हरकत में आता है तो अमल भी हरकत में आते हैं. So when iman will go into movement, then amal will go into action. तो ये ईमान की मेहनत ईमान को हरकत में लाने वाली मेहनत है. So this is iman lies, is action lies to bring the iman into harakat. लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा जिसका यकीन जितना मजबूत होगा उसके जिस्म से निकलने वाले अमल इतने मजबूत होंगे, और जिसका यकीन कमजोर होगा उसके अमल कमजोर होंगे. Luqman Hakim told his son that, oh my son, the person whose iman is strong, then the amal will be just as strong also will come out from his body. The iman is weak, yaqeen is weak, then even the actions also will come out weak from his body. हम इस दुनिया में रहते रहते 27 दिनों में हम भी डाउन हो जाएंगे. इस ईमान को हरकत लानी पड़ेगी. Therefore, even us things, 27 days in our localities, in our environment, even our batteries and our iman becomes weak. जब 3 दिन लगेंगे तो हमारी ईमान में हरकत आएगी. When we will go for 3 days in the path of Allah, then the iman will become recharged also. दूसरा क्या फायदा होगा? What will be the second benefit? दूसरा फायदा ये होगा जब हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे 10-15 नए लोगों को लेकर जाएंगे तो ये नबूवत वाली मेहनत, नबी वाली फिक्र और दीनदारी वाली जिंदगी हम 10-15 आदमियों को देने का जरिया बन जाएंगे. हम हमारे जरिए से इन 10-15 आदमियों में दीन आएगा, दीन की मेहनत आएगी, जो हमारी बहुत बड़ी कमाई हो जाएगी. When we will go for 3 days in the path of Allah, we take new brothers with us, 10 brothers will come with us. This now will become a means of our great reward. Deen will come into their lives will change also. They learn the effort of deen. For us now be great rewards in the akhirat. और तीसरा नफा क्या होगा? The third benefit, कि जिस देहातों में हम जाएंगे उन देहातों में हमारा जाना इन हुलियों के साथ, इन लिबासों के साथ, वहां के ईमान वालों के दीन पर जमने का जरिया बनता है. when you go to these informal settlements now, just with this libas and this garb of the sunnah, and those Muslim brothers that are there that are weak in the iman, they will see us now, they will get strong.
सहाबा इन जिंदगियों के साथ पूरी दुनिया में फिरे तो अल्लाह ने उनकी जिंदगियों को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। Sahaba Ikram, when they move like this in the path of Allah Tabarak wa Ta'ala, the style of this Allah Ta'ala made it reach every corner of the world too. हज़रत जी फरमाते थे तुम्हारे अंदर जो होगा वो दुनिया में फैल जाएगा। Hazrat Ji would say, what you have in your hearts of believers, this will spread in the world. इस जिंदगी को लेकर इन देहातों में जाने की जरूरत है। So we take this lifestyle and we go into the settlements and show them what is a dini life. हमारे इन देहात वालों में दो बड़ी कमजोरियां हैं There's two weaknesses in our settlements. और वो दोनों कमजोरियां आदमी को कुफ्र में दाखिल कर देती है। And these two things take them towards kufr and disbelief. एक उनके अंदर जहालत है। The one is now in those areas is ignorance. जहालत कुफ्र की सिफत है And ignorance now is a quality of kufr, disbelief. और दूसरा उनके अंदर फकीरी है, गुर्बत है। And they are poor, they don't have means. हदीस में आता है कादल फक्र यकून कुफ्रा, आदमी को फकीरी कुफ्र तक ले जाती है। Hadith Sharif says that because of poverty takes a person to disbelief and kufr. तो ये दोनों चीजें देहात वालों में होती है। So these two qualities of ignorance now and poverty are found in the people in settlements. जब तुम इस फिक्र को लेकर वहां जाओगे, वहां से नकद जमात बनाओगे, मस्जिदवार जमात बनाओगे, घर घर की मुलाकात करोगे, तो ये उनका सहारा बन जाएगा, उनके दीन पर जमने का सहारा बन जाएगा। So when we will go to our jamaats there and make gush in those localities, we will become a support to them. Deen will come into their homes. They go out in the path of Allah Tabarak wa Ta'ala, they'll become strong also. ये हमारी बड़ी कमाई हो जाएगी। This will become our reward. तो एक 3 दिन में ये बड़े बड़े नफे होते हैं। These are the big benefits of spending 3 days in the path of Allah. इसलिए शैतान कोशिश ये करता है कि जिम्मेदार ही 3 दिन न जाए। So Shaitan makes this effort now that the responsible brother doesn't go for 3 days. क्यों? Why? कि अगर वो 3 दिन गया तो खुद चार्ज हो जाएगा, तो फिर हरकत में आ जाएगा। Because if he'll go for 3 days, he'll become recharged and he'll go into movement. और वो जब 3 दिन जाएगा तो 10-15 आदमी अपने वहां से तैयार करेगा। फिर When he go for 3 days now, he'll take 10-12 brothers with him also. और जब वो 3 दिन जाएगा तो जिस देहात में जाएगा वहां हरकत करेगा, नकद जमात बनाएगा, मस्जिदवार जमात बनाएगा। And when he'll go for 3 days now to the outlying areas, there also he'll make an effort. Jamaat will get ready from there, and they'll also go out in the path of Allah. इसलिए जिम्मेदार को समझाता है कहाँ 3 दिन तो जाना चाहिए, मगर तो अभी बीमार है। So that's why you have to make him understand, the Zimmedar brother, you have to go for 3 days in the path of Allah, even though somebody is sick at home. तेरे अभी शुगर बहुत बढ़ गई है, Even though your sugar is gone high, you still have to go तेरा out. प्रेशर ठीक नहीं है, Even your pressure is not right, तेरे घुटनों में दर्द है। that your knees are paining. शैतान सबकी नब्ज दबाना जानता है, किसकी क्या दबाने की वो सब जानता है। Shaitan knows how to press your pulse, and he'll take out all the illnesses from you. किसी की अम्मी के नाम की दवा देता है, किसी की बीवी के नाम की दवा देता है, किसी की बच्चों के नाम की, किसी की शुगर के नाम की, किसी की ब्लड प्रेशर के नाम की, वो सब की नब्ज कौन सी दबाने की वो सब जानता है। Shaitan knows which button to press now. Whether it's your mother is ill or your father or your wife or something with your own illness, he knows which button to press now to hold you back from going out in the path of Allah. इसको सारे बीमारियां हैं लेकिन सारे दुनिया के काम करता है, खाली उधर तबलीग में आ जाता है। All these type of illnesses and things we have around us, people are still going to work. Only tabligh comes to a standstill. सारी गमी खुशी में जाता है, कारोबार में जाता है, उधर बाकी तबलीग में है। Person is depressed, person is happy, he's still going to work. When it comes to tabligh, now he can't go. वो नबियों से पहले शैतान पैदा हुआ, उसने सारे नबियों पर मेहनत की है, तो हम पर भी करता है वो। Shaitan also made effort of all Anbiya alayhimus salatu wasalam, he won't leave us. इसलिए उसका लुकमा नहीं बनना, उसके हाथ में नहीं आना। Don't become a morsel to Shaitan that he'll eat you up, that you be careful. और जब उसके हाथ में ना आने का मतलब कि हर महीने हम तो जाएंगे और अपने साथ अपनी जमात बनाकर 3 दिन देहातों में जाएंगे, शहर में नहीं, कहाँ जाएंगे? देहातों में। So don't come into the control of Shaitan. How are you going to be saved from his control is you get ready for your 3 days and take all the sathis with you. And don't go to the neighboring town or city, go to the settlements, to the outlying areas. मौलाना इलियास साहब फरमाते थे गरीबों को अपनी मेहनत का मैदान बनाओ, गरीबों में तुमको अल्लाह मिलेगा। Hazrat ji used to say, Rahmatullahi alayhi, that make your maidan and make the field of your effort, the poor people. अल्लाह, गरीबों को अपनी मेहनत का मैदान बनाओ, उसमें तुम्हें अल्लाह मिलेगा। Make them the effort, the poor people, make them the effort of the field of your effort, you will find Allah will become yours. 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाओ, देहातों में इंटरियल में जाओ, Go 50 kilometers, 100 kilometers, go out in the path of Allah. अल्लाह की नेमतों की कदर होगी। Like this, now you are showing appreciation to the ni'mas and bounties of Allah. इसलिए नियत करो कि इंशाल्लाह शैतान का निवाला नहीं बनेंगे, बल्कि हर महीने 3-3 दिन की जमात बनाकर नए नए साथियों को लेकर 3-3 दिन जाएंगे। So make niyat that I will not become controlled by shaitan, but I will make my jamaat and go out for 3 days in the path of Allah. कौन कौन जमात बनाकर जाएंगे 3-3 दिन? You will make the jamaats and go out for 3 days, inshallah. अल्लाह तौफीक दे, कबूल फरमावे। और अपने मोहल्ले में उमूम फिजा जिस तरह मर्दों की बनाई, इस तरह मस्तूरात की हफ्तावारी इज्तिमाई की तालीम के हल्के हों, उसमें मोहल्ले की सारी मस्तूरात जाए, उसकी जरूर फिक्र करो।
How we make the environment for the men outside the house, so we make the environment for the women also. Once a week they have the talim program. हर घर में तालीम जिंदा हो जाए उसकी फिक्र करो। To make fikr now, every home talim is taking place. और हमारे ऐसे मोहल्ले जहां तालीम के हलके नहीं है उनको छोड़ मत दो, And that area where there is no talim taking place, don't leave it. क्योंकि तालीम के हलके हम वहां कायम करेंगे जहां कवाइफ वाली बहनें हों, शराइत वाली बहनें होगी, वहां तालीम के हलके शुरू करेंगे। So those masturat that qualified to start the talim, go make fikr, they must start the talim in those areas. लेकिन जिन मोहल्लों में ऐसी मस्तूरात नहीं है उन मोहल्लों का क्या करोगे? In those areas now where we don't have ladies and masturat that qualified to start talim, what do we do then? ऐसे मोहल्लों को छोड़ मत दो। Don't leave those areas. आपके मोहल्ले में अगर कोई समझदार लोगों की जमात आए, मंझे हुए, सुलझे हुए, उनसे वहां दीन की बात करवाओ, तो कम से कम उनके कान पर अल्लाह रसूल की बात तो पड़े। Or some jamaat will come, somebody that has experience, I'll take them, have a program in that locality, explain to the ladies what it is now to bring deen into their lives. अगर मान लो कैसी जमात नहीं आ रही है तो आपस के मशवरे से आप लोग कोई जाकर वहां बात करो, कम से कम 15 दिन में एक मरतबा तो बात करो, वरना वो मोहल्ले छूटे के छूटे रहेंगे और उनकी नस्लों की नस्लें जाए और बर्बाद हो जाएगी। So if no jamaats like this come, they can explain to the ladies in that locality, then we make our own mashwara, that who has some experience, go to that locality, get the ladies together, make some fikr, explain to them, but don't leave them. If we will leave them, then they will leave, they will go out of our control, and from there now deen will leave also. और हंसते चेहरे के साथ नए नए मजमे को वसूल करो, हंसते चेहरे के साथ, अशाश बशाश, And make fikr on new brothers with a big heart, with a big smile, win them over and bring them out in the path of Allah. ताकि ये नस्ल बर्बाद और ज़ाय होने से बच जाए। So that locality we don't explain to them, then we lose the children also. So we meet them and we encourage them and we bring those children also. So they don't get wasted. हमारे अतराफ के देहातों की फिक्र के बाद पूरी दुनिया की फिक्र करनी है। हमारे अतराफ के देहातों की फिक्र के बाद पूरी दुनिया की फिक्र करनी है। After taking care of the settlements around us, now we have to make fikr and concern for the entire world. कैसे करेंगे? How we'll do this? हम आलमी नबी के आलमी उम्मती है। We are the alami ummat of the alami. That Nabi that came for the entire universe, we are his ummati. तो हम चिल्ले चिल्लों की जमातें बनाकर, 4-4 महीनों की जमातें बनाकर पूरी दुनिया में फिरेंगे। So we'll make jamaats of 40 days and 4 months and we'll travel the entire world for the fikr of deen. इसलिए अगर अल्लाह हिम्मत दे हर साल 4-4 महीने बनाए, हर साल 4-4 महीने लगाएं। Allah Ta'ala gives the ability, then every year we'll go for 4 months and 4 months. वरना साल का चिल्ला तो हर हाल में लगाएं। Otherwise 40 days we have to give every year. ताकि हमारे पूरे मुल्क में फिरें, अतराफ के मुल्कों में फिरें और पूरी दुनिया में जाना है। So we'll go out locally in our country, neighboring countries, the entire world will go in the path of Allah. मौलाना उमर साहब की एक बात सुनाता हूँ आखिरी। Ahmedhusain Sahib used to say, मौलाना उमर साहब की, Umar Sahib, rahmatullah. मौलाना उमर साहब ये फरमाते थे, दुनिया में से इंसान बहांज मर जाता है। बहांज ऐसी औरत को कहते हैं जिसकी औलाद नहीं थी, अकेली मर गई। कल लोग ऐसे मर जाते हैं, हम ऐसा नहीं मरेंगे। He says that one person leaves this world like a woman that is barren. She left this world with no children. He says that a person can leave this world also alone, with nobody around him. He says, we will not die like this. We will not leave the world like a barren woman who died without any children. We will not leave the world like this. हम कैसा मरेंगे? How we will die? तो हज़रत फरमाते थे, हम हजारों इंसानों को कमाकर इस दुनिया से अपने नामा अमाल में लेकर जाएंगे। यहां भी मेहनत करेंगे, देहातों में भी मेहनत करेंगे, पूरी दुनिया में मेहनत करेंगे। जब कयामत में हम उठेंगे तो सब जगह के लोग हमारे नामा अमाल में, यहां के भी वहां के भी। क्यों? कि हम वहां चले हैं, फिरे हैं, गश्त किए हैं। तो जितना दीन फैला वो हमारे जरिए से, तो कल कयामत के दिन हमारे झंडे के नीचे हजारों लाखों लोग होंगे। इसलिए हर साल 4-4 महीने चिल्ले पाबंदी से लगाना है। So you say that we will not die alone, but we will travel the world for the fikr of deen. So on the day of Qiyamah we will be raised before Allah Tabaraka wa Ta'ala. Because we travel every year for the fikr of deen, when we leave this world we will take the reward of all the thousands of people with us. And when we will wake up on the day of Qiyamah, and Allah Ta'ala put our flag, behind our flag we will have a whole army behind us. Ya Allah, we met so many people, we did gush, we encouraged them, we brought them to the deen of Allah Tabaraka wa Ta'ala. You won't stand alone, we have an army behind us. देखो ये आपका मुल्क अफ्रीका का 1956 में 1963 में मौलाना मूसा साहब आए थे, उनके जरिए से यहाँ तबलीग आई। वो तो कब्र में जाकर सो गए। अब ये सारी बाहर उनके नामा अमाल में जाएगी। कल कयामत के दिन उनके झंडे के नीचे उलमा, हुफ्फाज, दीन की मेहनत करने वाले कितने होंगे। ऐसे हम भी काम करके जाएंगे। If I know one country, South Africa, when Musa Sahib came in the 60s and 70s, he started the effort in South Africa. Now he's going to the qabr. Qiyamah's day, he will wake up, Allah Ta'ala put his flag. And the entire Africa army will be behind him. You went there, he made effort. Look at the ulama, the huffaz, the qurra. All this is all your kamai and all your reward. करेंगे इंशाल्लाह। We'll do this inshallah. हर साल कौन कौन 4-4 महीने लगाएंगे? You will give 4 months every year inshallah. हर साल 4 महीने, खाली 4 महीने। हर साल खाली कितने?
बोलो खाली 4 महीने, Only 4 months in the year. Only 4 साल months. में खाली 4 महीने, 8 महीने आपके, 8 कौन months. कौन लगाएगा? 8 months is for you, 4 months जरा for अच्छे से Allah. हाथ उठाओ। You lift our hands, inshallah. 4 दूसरी months. नियत करो कि अकेले नहीं लगाएंगे, अपनी मस्जिद से अपनी जमात बनाएंगे। Gee, we won't go alone to take our sathis and friends with us too, inshallah. सब जिम्मेदार एक साथ नहीं जाएंगे, अपनी अपनी जमात बनाएंगे Some responsibilities will take a jamaat and go with और them दुआओं का एहतिमाम करें, and make dua. इसलिए कि करने वाली जात अल्लाह की है। What Allah Ta'ala does. करोगे इंशाअल्लाह? We'll do it inshallah. अल्लाह हमें तौफीक दे, कबूल फरमा। Allah Ta'ala accept, Allah make it. सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नमाज के